Hello everyone, good evening to one and all present here. Today once we are back with another webinar, and this today's topic is very new topic for everyone, that is discussion on social model of disability. So we have two eminent personalities before us, uh, Mr. Suresh Dongre and Miss Deepa Palaniappan ma'am. So welcome ma'am, and I would also like to welcome Umayyad sir and Zainab ma'am from Bookshare. So welcome ma'am and sir on board. So before I proceed further, I would request Umayyad sir and Zainab ma'am to uh, take few minutes and speak about something about Bookshare. Yeah, good evening. I am Zainab from Bookshare. Bookshare एक ऑनलाइन लाइब्रेरी है जो पीपल विथ प्रिंट डिसेबिलिटी के लिए सबसे बड़ी ऑनलाइन लाइब्रेरी है, जिनको पढ़ने में दिक्कत आती है उनके लिए. Now, what are people with print disability? People with print disability are those people who cannot handle printed books. Okay, यानी वो पकड़ नहीं सकते या पढ़ नहीं सकते वैसा. तो ये एक सबसे बड़ी लाइब्रेरी है जहां पे ये लोगों को ही मेंबरशिप मिलती है, जैसे विजुअली इम्पेयर्ड हो, फिर डिसलेक्सिक हो, फिर फिजिकली चैलेंज्ड विद द हैंड, यानी हाथ से वो किताबें पकड़ नहीं पाते. तो ये लाइब्रेरी में कितनी बुक्स है? ये लाइब्रेरी में टोटल 10 लाख के ऊपर किताबें हैं, जो 95 कंट्रीज में चलती है. ये लाइब्रेरी 36 लैंग्वेजेस में है, 50 कैटेगरीज में बुक्स है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि द मेंबरशिप इज फ्री फॉर ऑल members of India, all print disabled people of India, for individuals as well as organizations. Now, to get this free membership, please call us on 9650-211-575 or write to us at membership-india@bookshare.org. ठीक है. और ये बुक्स आप कैसे भी पढ़ सकते हैं, या तो फोन पे, या तो डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, या कोई डेजी प्लेयर पे. इसमें आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की किताबें मिलेगी, यूनिवर्सिटीज की किताबें हैं, और बहुत सारी लैंग्वेजेस में भी है. ओवर टू यू होमियर. Thanks for introducing Zainab, and thanks to Bhumika Trust for organizing this workshop. Bookshare is proud to be a partner with you, and we'll continue this partnership as we go along. So probably next time when we meet again, we'll be talking a little bit more about Bookshare, and we'll be explaining something more as to how to read these books and where to read this book. So every time we'll be talking a little bit of Bookshare and then handing it back to you guys. Back to you, Jen. Thank you, sir, and thank you, Zainab ma'am, for giving us an insight about the Bookshare, and to all the viewers and all the attendees who are just attending this webinar online. So, moving further, I would like to request my journal secretary, Ms. Namrata Mishra, to introduce our eminent personalities and today's guest and the speakers. So first would be Miss Deepa Palaniappan ma'am and Mr. Suresh Dongre. So over to you, Namrata. Thank you, Jen. Now, I, Namrata Mishra, would take the honors to introduce one of our prominent speaker, Deepa Palaniappan.
disability inclusive development practitioner. Passionate about strengthening documentation capabilities of disabled people's organization and community-based initiatives. She works as a mainstream disability consultant for poverty illustration program, and her background is in self-help groups, livelihood skill development, and community-based intervention with specific experience and interest in rural poverty and disability health contexts. She is also a trained specific educator with children with multiple disabilities and neurological disorders. And our other speaker, Mr. Suresh Dongre, is a program manager at the Leprosy Mission Trust. I'm sorry. Mr. Suresh Dongre, a program manager at the Leprosy Mission India. In year 2013, he has gotten National Award as role model in the category of leprosy cure by the President of India. He helped in rehabilitation of 1,200 people affected by leprosy by their children through TLM and BTC Nasik. He has been directly working for 900 people with disability for sustainable livelihood. He is the founding member of BVJF, National Disabled People Organization, which is working with 2 lakh people with disabilities in India. Welcome, sir. Welcome, ma'am. Over to you. Thank you, Bhumika. So, can we start? Yeah. Before you start, ma'am, I would like to request you to first launch the website of the Bhumika Trust and to launch the internships that we have just introduced. So, would request you to do so. Okay, I'm just opening the website and sharing the screen here. Just a second. Okay. So hope everyone is able to. Are you able to see the screen? Those who are. Yes. Yes. Okay, yeah. So I really, this is the Bhumika Trust team. I really appreciate because as those of you here already know them because they have really worked a lot on disability issues as students and have kind of like taken up a lot of major themes and been part of a lot of discussions also within Delhi University Circle and of the recent court case that you all are aware of, that judgment is in favor of Bhumika Trust. So in many aspects, I really appreciate this particular team that is coming together, very young, vibrant, and I have like really good hope for the coming years in how the team is going to shape discussions or disability discourse in a kind of, I have good hope that it's going to be very innovative or a unique kind of intervention that is going to be planned in terms of discussions or holding discussions or even any other interventions that's going to be planned, and I congratulate you. And this is the website I just shared with you all online, https:/bhumikatrust.org. And anything else? Ma'am, I would request you to to just show them the internship section also. They can just look out just tell them about the internship. The internship section is in the website? Yes. Okay. The home page. So they have put out a call for social media internship and also law internship, which I think it's very important that you're doing it at the very early stage. And the social media internships, they're looking for someone who lives and breathes social media, I think, which covers most youngsters these days.
and like a team that can looking for someone who can create a plan for social media strategies for Bhumika Trust, and also assist in the growth of the trust by raising awareness through various social media platforms. And this is going to be 1 month and location in Delhi. And I request everyone present here to also share with your other contacts across your student circles. And there is also a law internship. Preferably, they're looking for someone who's or either a student of law or with a degree in law or public policy, and someone who can help the team in drafting and negotiating legal, also working out legal analytical skills and handling a lot of drafting work and legal research work. And this probably is for 6 months. Actually, this internship is for 6 months and location in Delhi. Again, this link, I'll paste it in the chat so that people can, students who are here as participants can share it with your other colleagues and your friends and give it like a wide publicity for this. I'll share it in the chat. Congratulations, team. Thank you, ma'am, for your words. And I would like now you request you to proceed with the discussion. Suresh. Thank you. So we have here Suresh ji, who is actually kind of very well-known person, not only across India, but across globally also, especially those working within neglected tropical disease community, especially the leprosy community, even people in policy making circles across globe. He's quite well-known as a champion. And I'm glad he agreed for this because he's usually very occupied and extremely busy with his workshops or trainings, and a lot of things are going on with him, and day-to-day interventions and plans, and also his work with the Leprosy Mission Trust. So I'm really glad and I'm thankful that I had explained to him that this is going to be an audience of students mostly, and also the organizers of students circle. And really it would be nice if you can join us, and I'm totally so grateful because this is the kind of a theme that I had requested Bhumika Trust to take up also, like not to be not to follow the trend that usually what is happening in disability circles in Delhi, rather like carve out a different path for yourself in talking to people who are, or bringing visibility, or more or giving a platform for people who are actually doing grassroots work, and especially someone like Suresh ji, because he's also connected globally as well as doing a lot of grassroots work, and he himself is a champion, a person affected, and his wife also is quite well known, also a person affected. So there's a lot of background and field level experience and personal story that he could bring to us, and he'll be like a very valuable contact for you as a team also. And I'm glad sir ने agree किया यहाँ पे participate करने के लिए. To begin with, just I'll give you a little bit of background because हम sir से पूछने वाले हैं. This is going to be a discussion, and I'll just pose a set of questions and inviting him to respond to that. And leprosy is one of the neglected tropical disease as per WHO classification. We have 20 neglected tropical disease. It's called NTD. I'm just typing it in the chat. So leprosy is one of the neglected tropical diseases as per WHO classification, and this is how global community recognizes and deals with leprosy as a policy. When you talk about policy, mostly it's covered under NTD policy globally. And within India, we have the unique system where leprosy is also part of, due to the stigma associated, it's also part of disability rights community, as well as our RPD Act 2016. One of the 21 types of disabilities is leprosy cured. So for us, it is as a community that's going to, most of you here are already aware of or part of disability rights in a great extent. And so I think it's very important because I know from my own community training experience, there is a lot of misunderstanding and kind of like a fear, even among disability rights community trainers and people who are involved in disability rights at community level. There is a lot of misunderstanding and a kind of mythological or myth or a fear or a lack of awareness on what is
the issues surrounding leprosy affected persons. So I think most importantly, this kind of awareness needs to be spread, and if at all, it should be the audience or the speaker should be someone like Suresh ji, who's also coming from a personal story background, as well as community work, directly community work, as well as he's been a leader and a trainer and associated with it in a lot of ways. And I hope it's going to be a very productive session. At least all your doubts and at least those who are participating here will come out of it. I hope that, without absolutely any doubt about what is leprosy and what is the issues for the people affected in India. Suresh ji, thank you for joining us here. Shall I start the discussion? Yes, ma'am. Okay. Hi. So one thing is, of course, मुझे ये इसमें शुरू करना है कि स्टेटस क्या है इंडिया में, मगर हम स्टेटस से जाने से पहले आई एम जस्ट गिविंग इट एज अ टीजर कि वी वांट टू डिस्कस अबाउट द स्टेटस ऑफ लेप्रोसी इन इंडिया, बट उसके पहले थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी हम क्लियर कर देते हैं, क्योंकि देयर आर दोज, बिकॉज आई एम लाइक ऑल्सो पार्ट ऑफ द डिस्कशन, सो हम लोग जान रहे हैं देयर आर 3-4 टर्मिनोलॉजीज दैट आर वाइडली यूज्ड, magar a lot of people are not aware of these kind of like various terminologies, what they mean differently. So pehle hum terminology, for example, there is also globally a term called Hansen survivors, and also there is also the thing called leprosy cured and leprosy survivor, and also person affected. Nowadays it's very common to call as person affected, and champions, who are champions. So is type of the what is within the community, this kind of a common terminology that's being used. Can you kind of deconstruct it for us one by one, and then tell us who are this Hansen survivors and leprosy cured, what is the difference, and person affected, and all the kind of different terminology? Thank you. Thank you, Deepa ma'am, and also I'm very thankful to Bhumika Trust for giving me this opportunity. Just before going to discussion, I would like to share brief about me, because your questions will be related to me or people like me. So shall I give 5 to 6 minutes, and exactly, then we will start, because then the students who are participating here, they will be more clear on that topic. Exactly. So that just I will off my camera, because some internet issues here, because it's raining. So I will just off my video and start it. So thank you so much again, and I am Suresh Dongre. Working as a program manager with the Leprosy Mission Trust India from last 20 years. I'm working same organization. This is my first job, you can say like that. Leprosy is related to me, because I experienced leprosy when I was studying in 10th standard in 1996. That time I saw some patches on my body, but I am from a very small village. So I was not aware about that. Even my parents also were not aware about what it is about. And then the patches were increasing, because I was not taking any treatment, because we were not aware about this leprosy or all. Then my parents took me traditional healer, and he suggested to cut some chicken like goats, and he said this birds, so you cut this and then your son will cure. So my parents did like that also, and but then also no cure. Here I was studying in 10th standard, and my face, there was a swelling on my face and redness. Many my friends, so they were asking me what happened, why you are becoming red like that, why your hands like that, because my hands also were little bit clogged. Then here my parents took me to traditional healer, and this is not the effect, and my leprosy was increasing. And then finally in 1998, it took 2 years. And then just I was studying in 11th standard, and I fall sick because that leprosy reaction increased. Then my parents took me, because I had the nose complication also. In leprosy, there is a nose complication also there. My parents took me ENT doctor, and he referred me to leprosy specialist in Buldana district. I am from Buldana district, Maharashtra. Then he said that he only diagnosed that, and he said your son is having leprosy, and you have to admit him in leprosy hospital. But my parents denied that, because in my village there was a lot of stigma about leprosy. I never seen leprosy person, but my parents heard about, or they may know. So they said, no, we will not admit him, because if we admit him in leprosy hospital, or people, there are some comments. Shall I
speak Hindi or English? Actually, Hindi is also okay. I mean, I think everyone here Okay. understands Hindi, and also there seems to be some disturbance on your headphone. Can you remove the headphone and try speaking directly to the laptop? Okay. Hello. Okay now. Yeah, little bit increased audio, and then you're good, because the headphone is probably disturbing. There is a disturbance from your shirt or something, like there is a I scratching remove my sound. headphone now. Now अभी ठीक है, आवाज आ रहा है? हाँ, अभी ठीक है, हाँ ये ठीक है। थोड़ा सा आवाज बढ़ा के आप ये कर सकते हैं, शुरू तो मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया लेप्रोसी हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए, क्योंकि गांव में बहुत सारा स्टिग्मा था लेप्रोसी के बारे में, और उनको मालूम था कि अगर इसको लेप्रोसी हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे तो बाकी लोगों को मालूम हो जाएगा। फिर उन्होंने डॉक्टर से कहा कि हम लोग घर से ट्रीटमेंट करेंगे, और मुझे बहुत हाई लेवल रिएक्शन था, तो उसमें स्टीरॉयड होता है, प्रेडनिसोलिन नाम की दवाई होती है, उसमें अगर 40 ml दे रहे तो उसको स्लोली कम करना होता है। अभी एक्चुअली मैं जब लेप्रोसी मिशन में काम करो तो ये बातों को समझ रहा हूँ, लेकिन उस समय नॉलेज नहीं था, और मैं घर से ट्रीटमेंट ले रहा था, एमडीटी था और बाकी सपोर्टिंग मेडिसिन था, स्टीरॉयड था। तो एक्चुअली में बहुत मेरे पिताजी फार्मर्स थे और घर में ज्यादा इतना आमदनी नहीं था, तो फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक ना होने की वजह से अगर 1 महीने के बाद मेरी दवाई खत्म भी होती थी, उसके बाद में भी मैं वहां नहीं जा पाता था, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल में मेरा हॉस्पिटल था मेरे गाँव से 70 किलोमीटर दूर, और फिर उसमें गैप आ जाता था। और स्टीरॉयड में ऐसा है कि अगर 40 ml आप ले रहे हैं तो उसको 35 फिर 30 तो स्लोली कम करना पड़ता है एक्चुअली, बट वो ऐसा नहीं होता था, मेरा डायरेक्ट रुक जाता था, तो मालूम नहीं था, फिर वो ज्यादा रिएक्शन बढ़ते जाता था। तो ऐसा करते करते मैंने 1.5 साल घर में दवाई खाई, लेकिन वो फिर मेरा लेप्रोसी तो कम नहीं हुआ, लेकिन फिर ज्यादा स्वेलिंग आने लगी, मेरे पूरा बॉडी पे स्वेलिंग आ गया, मेरे चेहरे पे स्वेलिंग आ गया, थोड़ा मेरा आईब्रोज चला गया, और ज्यादा रिएक्शन बढ़ते गया। यहाँ पे मैं जब 10th पास करके 11th में गया, और फिर वही दोस्त लोगों के, टीचर लोगों के सबके सवाल थे कि ये क्या हो गया क्या हो गया, तो मैंने फाइनली सोचा कि मैं अभी कॉलेज नहीं जाऊंगा, और 11th पास होने के बाद मैंने कॉलेज छोड़ दिया, मैं घर में अपनी खेती में काम करने लगा। लेकिन यहाँ पे मेरा रिएक्शन कम नहीं हो रहा था, और फाइनली दिसंबर 98 में तो बहुत ज्यादा बेड रिटर्न हो गया, मेरा एच भी 6 तक आ गया, और मैं इवन चलने के लायक नहीं था, मतलब उठ बैठ भी नहीं सकता था। फिर जब मेरे पेरेंट्स डॉक्टर के पास लेके गए, फिर डॉक्टर ने बोला कि अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आपको इसको लेप्रोसी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। तब तो मेरे पेरेंट्स ने भी माना, क्योंकि अभी कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो मैं बहुत ज्यादा सीरियस था, तो उन्होंने मुझे पूना की लेप्रोसी हॉस्पिटल है, कोलवा लेप्रोसी हॉस्पिटल, वहाँ पे एडमिट किया। वहाँ पे जाने के बाद डॉक्टर ने बोला कि मतलब ये अभी यहाँ से सिचुएशन शुरू होती है कि किस तरह से होता है। तो जब मैं डॉक्टर के पास लेके गया, तो मुझे लेके गए, तो डॉक्टर ने बोला कि क्यों इतना लेट आप इसको लेके आए, और मेरे सामने ही बोला उन्होंने, डॉक्टर ने, कि इतना लेट आ गया है तो अब 2-3 दिन भी नहीं बचेगा अभी, क्योंकि मेरी सिचुएशन वैसी थी। लेकिन ये बातें मैं अभी जब रिकॉल करता हूँ बड़ी हर्ट होती है, क्योंकि आमतौर पे जब इस तरह का कुछ बताना होता है पेशेंट को तो बाहर भेजते हैं ना, तो लेप्रोसी को इस तरह से भी मुझे लगा कि मुझे उतना भी उन्होंने ये नहीं समझा कि इसके सामने कैसे बोला जाए, कि इसको क्या लगेगा। फीलिंग्स कभी कभी बहुत मिसिंग थी बाकी लोगों के मनों में, या इवन मेडिकल प्रोफेशनल्स के बीच में भी। तो डॉक्टर ने, मेरे पिताजी ने उनको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज उसको एडमिट कीजिएगा, और फिर मुझे वहाँ पे एडमिट किया गया, मुझे ब्लड चढ़ाया गया, सारी ट्रीटमेंट शुरू हो गई। और फिर वहाँ पे मैं 2.5 साल वहाँ पे मैंने ट्रीटमेंट लिया कोंडो हॉस्पिटल में। और जब 6 महीना तो मैं बेड रिडन ही था, लेकिन उसके बाद में जब धीरे धीरे काम करना शुरू किया, थोड़ा मतलब मैं हलचल मेरी हो रही थी, मैं अपना प्लेट खुद धो सकता था। और तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपको अभी कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो पेशेंट लॉन्ग टर्म रहते हैं उनको कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। तो उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया कि एक तो आप झाड़ू मारने का काम करो, या फिर मैं 10th पास था, तो कहा कि आप या तो फिर मेडिसिन बांटने का काम करो। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता हूँ। तो मैं फिर वार्ड में मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन का काम वगैरह ओपीडी में भी काम करने लगा। ऐसे मेरा 2.5 साल वहाँ पे गुजर गया। जब वहाँ पे मैं लोगों से मिला तो वो लोग बताते थे, हमारे बाद में जैसे बाकी लेप्रोसी लोग थे, वो बताते थे कि हम भी यहाँ जब आए थे तो हमारा पूरा उंगली था, 10 उंगली था, लेकिन उसके बाद में झड़ गया, तो इस तरह से। और वहाँ पे मेन प्रोफेशन अगर वहाँ पे देखा जाए तो उनका एक ही प्रोफेशन था कि वहाँ पे जाके बेगिंग करेंगे, रेलवे स्टेशन पे जाएंगे, और वो उसी में खुश थे कि इतना पैसा मिलता है, या हमको इस तरह से करेंगे, जिसको ज्यादा अल्सर है, जिसको ज्यादा डिफॉर्मिटी है, उसको ज्यादा मिलता है, इस तरह से बातें होती थी। तो मुझे लगता था कि शायद मेरा भी फ्यूचर इसी तरह से होगा, या मुझे भी बेगिंग करनी पड़ेगी। और जो होप्स थी लाइफ में वो सब खत्म हो चुकी थी, और मुझे लगा था कि आप मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा लाइफ यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो वहाँ पे 2.5 साल रहा। जब 2.5 साल जब रहा, तो जब मैं पूरा एमडीटी पूरी क्लियर खा के मैं जब ठीक हुआ,
तो वहाँ पे डॉक्टर ने मुझे बुलाया और मुझे बोला कि अभी आपको डिस्चार्ज देना पड़ेगा। यूजुअली जब हम बाकी लोग आम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में रहते हैं, और जब उनको ये सुनने को मिलता है कि डिस्चार्ज मिल रहा है तो बड़ी खुशी होती है पेशेंट को या उसके फैमिली मेंबर्स को। लेकिन लेप्रोसी में ऐसा नहीं था, जो मैंने खुद अनुभव किया या मैंने खुद देखा। तो वहाँ पे वो हॉस्पिटल में किसी को अगर पनिशमेंट देनी है तो उसको बोलते हैं कि तुमको डिस्चार्ज देंगे। इसका मतलब वह हॉस्पिटल से निकाल दिया गया तो वो कहा जाएगा, क्योंकि घर में गाँव में तो लोग लेते नहीं। डिस्चार्ज बड़ा पनिशमेंट था। तो फिर मुझे भी बुलाया गया कि अभी आपका ट्रीटमेंट पूरा हो गया और आपको अभी डिस्चार्ज देंगे। और जब मैं वहाँ पे एडमिट था, जब मुझे लेप्रोसी हुआ और जब मैं पूना में एडमिट था, तो मुझे तो स्टिग्माटाइज हुआ, लेकिन मेरी फैमिली को भी बहुत स्टिग्माटाइज किया गया। मेरी 3 बहनें हैं, 3 बहनें थी, मतलब एक बहन की डेथ हो गई, तो उनकी शादी नहीं हो रही थी। मेरी भी शादी तो बात ही नहीं थी, लेकिन उनकी भी शादी नहीं हो रही थी। उनको किसी फैमिली फंक्शन में नहीं बुलाया जाता था, भले उनको कुछ नहीं था, लेकिन मुझे था, लेकिन उनको भी इस तरह से स्टिग्माटाइज किया जाता था। और उस समय तो फोन नहीं थे, तो वो मुझे लेटर लिखते थे, उसमें ये सब बातें बताते थे। मुझे मालूम था कि मैं अगर वापस गांव तो नहीं जा सकता, अभी क्या करूंगा, ये सवाल था सामने। फिर वहाँ के सोशल वेलफेयर ऑफिसर ने मुझे बुलाया और कहा कि एक ऑप्शन है, लेप्रोसी मिशन नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे लेप्रोसी लोगों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग्स दिए जाते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, वहाँ पे रहने का भी व्यवस्था है। तो मुझे लगा कि ये बड़ी अच्छी न्यूज मुझे मिल गई, क्योंकि मुझे घर नहीं जाना था, मुझे कहीं ना कहीं अपना एडजस्ट होना था, कहीं रहना था, पढ़ना ये ऑप्शन नहीं था। फिर मैंने कहा कि हाँ मैं वहाँ पे जाऊँगा। फिर उन्होंने मुझे मेरी क्वालिफिकेशन जैसा मैं 10वीं पास था, परसेंटेज ठीक था, तो उन्होंने कहा कि आप कंप्यूटर के कोर्स के लिए जाओ। तो मैंने तुरंत उस बात को मान लिया और मैंने फिर लेप्रोसी मिशन में आया 5 जून को 2001 में। और वहाँ पे फिर मैं कंप्यूटर कोर्स में मैं ज्वाइन किया और वहाँ पे 1 साल का कोर्स था। 1 साल का कोर्स पूरा होके मैं फिर वहाँ पे वापस पुनः मेरे हॉस्पिटल में चला गया। जब 1 साल पूरा हुआ तो क्योंकि मैं वहाँ पे कंफर्टेबल था, क्योंकि वहाँ पे मेरे जैसे लोग थे, सब लेप्रोसी लोग थे, तो वहाँ पे कुछ सीखने का कोई सवाल नहीं था, वहाँ पे गए। लेकिन ये लेप्रोसी मिशन के सुपरिटेंडेंट ने फिर मुझे फोन करके बुलाया कि आप एक यहाँ पे काम है, आप आ जाओ, डीटीपी का कोर्स भी करो, डेस्कटॉप पब्लिशिंग जो प्रिंटिंग वगैरह डिजाइन किया जाता है वो कोर्स भी है, साथ साथ काम करो। तो मुझे लगा ठीक है चलते, क्योंकि अभी तो यहाँ पे कोई जॉब नहीं है। तो फिर वहाँ पे मुझे बुलाया गया और फिर वहाँ पे मैंने काम करना शुरू किया। डीटीपी में पढ़ता था, साथ साथ में ऑफिस बॉय का काम करना शुरू किया, जो भी झाड़ू पोछा साफ सफाई करना होता है वो काम मैंने शुरू किया। तो मुझे 500 रुपीज पर मंथ स्टाइपेंड उस समय मिलता था। 1 साल तक मैंने जब काम किया तो मुझे कभी कभी ट्रेनिंग ऑफिस में भी काम दिया जाता था कि थोड़ा लेटर टाइप करो इस तरह से। तो मुझे समझ में आ गया कि बहुत सारा काम मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं है। तो मैंने फिर लेप्रोसी मिशन के सुपरिटेंडेंट थे, वहाँ पे उनके पास जाके रिक्वेस्ट किया कि सर मैं रिस्टार्ट करना चाहता हूँ मेरा एजुकेशन, और मेरे जो जहाँ पे लेप्रोसी मिशन है उसके बाजू में कॉलेज है, पंचोटी कॉलेज, जस्ट 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे। उनका कि मैं वहाँ पे एडमिशन लूंगा, फिर मुझे सैटरडे को कॉलेज जाने की परमिशन दीजिए, लेकिन मैं मेरा पढ़ाई फिर से शुरू करना चाहता हूँ, 12th में एडमिशन देना चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि आपको सैटरडे को छुट्टी भी मिलेगी वहाँ जाने के लिए, और साथ साथ एक CTY नाम का एक प्रोजेक्ट होता है लेप्रोसी मिशन में, कैच देम यंग। उसमें होता है कि जो लेप्रोसी बच्चे हैं या लेप्रोसी लोगों के बच्चे हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है एजुकेशन के लिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका फीस भी हम भरेंगे, वो प्रोजेक्ट में से आपको सपोर्ट करेंगे। तो मेरे लिए तो बड़ा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऐसा मुझे लगा। और फिर मैंने 12th में एडमिशन लिया और मैं सिर्फ सैटरडे को कॉलेज जाने लगा। ऐसा करते करते 1 साल में मेरा 12th पूरा किया और मैं फर्स्ट क्लास में पास हो गया 12th में, मुझे 64% मार्क मिले। सुपरिटेंडेंट खुश हो गए, उन्होंने कहा कि फिर आगे पढ़ो। मैंने ग्रेजुएशन BA को एडमिशन लिया। इसी तरह से मैं सैटरडे को जाता था और फिर यहाँ पे थोड़ा मेरा प्रमोशन होता गया। मैं पहले ऑफिस बॉय या पियोन था, तो फिर क्योंकि मेरा कंप्यूटर का कोर्स हो गया था और मैं 12th पास होकर ग्रेजुएशन कर रहा था, तो मुझे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का काम दिया गया कि बच्चों को बेसिक जो MS ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट होता है वो पढ़ाओ। तो मुझे काम दिया गया, तो यहाँ पे मेरा पढ़ाई शुरू हो गया। तो मैं लेप्रोसी मिशन के सपोर्ट से ही मैं मेरी पढ़ाई कर सका। और मुझे आज बड़ी खुशी है कि मैं आज तक अगर कहा जाए तो मैंने BA कंप्लीट किया, उसके बाद में मैंने MA किया पॉलिटिकल साइंस में, उसके बाद में मैंने मेरा MBA कंप्लीट किया ह्यूमन रिसोर्सेज में, उसके बाद में मैंने MSW किया मास्टर ऑफ सोशल वर्क, उसके बाद में मैं PhD एंट्रेंस भी पास हूँ, लेकिन गाइड ढूंढ रहा हूँ। साथ साथ मैं अभी भी लॉ पढ़ रहा हूँ, LLB कर रहा हूँ। ये सब मैं लेप्रोसी मिशन के साथ काम करते करते और मैं पढ़ता गया। जब मेरी पढ़ाई होती गई तो मेरा प्रमोशन भी होता गया धीरे धीरे। और उसके बाद में जब मैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर था, फिर मैं ऑफिस असिस्टेंट बना। फिर 2008 में मैं प्लेसमेंट ऑफिसर करके प्रमोट किया गया। उसमें मेरा काम था कि लेप्रोसी बच्चे हैं या लेप्रोसी लोग हैं, यूथ है, उनको अलग अलग कॉलोनी में जाके उनको लेप्रोसी मिशन के बारे में बताना,
वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में बताना, फिर उनको ITI ट्रेनिंग के लिए लाना, और उनका जब कोर्स पूरा हो जाएगा तो उनको जॉब लगाना। तो जो इंट्रोडक्शन में कहा कि 1200 लोगों को मैं उसके द्वारा सपोर्ट कर सका थ्रू लेप्रोसी मिशन, फिर उनको एडमिशन के लाना, फिर उनका एडमिशन, उनका कोर्स पूरा होने के बाद उनको जॉब पे लगाना अलग अलग लेप्रोसी इंडस्ट्री में। तो यह इस तरह से मैं 2012 तक वहाँ पे काम किया। उसके बाद 2012 को फिर मुझे एक प्रमोशन के लिए ऑफर आया और मैं प्रोग्राम मैनेजर बना अमरावती डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में ही। और अभी मैं डायरेक्टली 2000 विकलांग लोगों के लिए काम करता हूँ। पीपल अफेक्टेड बाय लेप्रोसी भी है, अदर डिसेबिलिटीज भी है। ये सब मेरा काम देखिए 2013 में मुझे नेशनल अवार्ड मिला, रोल मॉडल लेप्रोसी क्यूअर्ड करके जो कैटेगरी है उसमें। 2010 में मेरी शादी हो गई, क्योंकि मंगला है मेरी मिसेस है, उनको भी लेप्रोसी था, उनकी भी शादी नहीं हो रही थी, दोनों साथ में पढ़ते थे, हम लोग फ्रेंड्स थे। तो बाकी लोगों ने सजेस्ट किया कि क्यों ना आप शादी करो। इस तरह से फिर उन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा और फिर हमने शादी की 2010 में। और उसके बाद में जब यहाँ पे आए तो फिर जब एज अ प्रोग्राम मैनेजर आया तो फिर बहुत सारा काम सीखने का मौका मिला और नई नई ट्रेनिंग्स करने का मौका मिला। तो आज मैं मोर देन 50 अलग अलग टॉपिक्स का मास्टर ट्रेनर हूँ। उसमें एक्सेसिबिलिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, प्रोफेशन ऑफ मैनेजमेंट है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, काउंसलिंग है, एडवोकेसी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इस तरह से अलग अलग ट्रेनिंग का मैं मास्टर ट्रेनर भी हूँ। साथ साथ मैं जैसा कि इंट्रोडक्शन में बताया गया कि मैं एनटीडी जो होता है निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, उसमें एक अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, टास्क ग्रुप या वर्किंग ग्रुप्स होते हैं, उसमें पार्टिसिपेशन इंक्लूजन एंड ह्यूमन राइट्स जो ग्रुप है उसमें मैं को कन्वीनर हूँ। और मेरे साथ में मिस्टर मथियस है जो पराग्वे देश से, तो हम दोनों को कन्वीनर है। उसमें पूरे ग्लोबल लेवल पे हम लोग काम करते हैं। उसके साथ जो एक लेप्रोसी, जो भी वर्ल्ड में जो भी लेप्रोसी संस्थाएं काम करते हैं, उनका एक अम्ब्रेला टर्म है आईलेप, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल लेप्रोसी फेडरेशन। उसमें एक आईलेप टेक्निकल कमीशन है, वो टेक्निकल कमीशन में भी मैं मेंबर हूँ, जिसमें ह्यूमन राइट्स और स्टिग्मा रिडक्शन के लिए काम होता है। उसी तरह भारत सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन 2015 में। तो मैं उसमें भी एक्सेस ऑडिटर हूँ, भारत सरकार के लिए ऑडिट करता हूँ अलग अलग राज्यों में। तो मैं एक्सेस ऑडिटर भी हूँ। साथ साथ एक BVGF भारतीय विकलांगजन फोरम तक डेवलप किया गया 2013 में, उसमें मैं फाउंडर मेंबर भी हूँ और उसमें मैं ट्रेजरर का वॉलंटरी काम करता हूँ। उसके साथ साथ अभी हम लोग जो BVGF जो है उसमें पूरे इंडिया में हम लोग मोर देन 2 लाख विकलांग लोगों के लिए काम करते हैं अलग अलग स्टेट्स में। तो ये सारी जो बातें हैं, जब मैं अभी काम करता हूँ लेप्रोसी के लिए या डिसेबिलिटी के लिए, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें मिसिंग लगती है। तो जो अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे उसमें बातें आएगी। तो पहला सवाल था मैम का कि इसको क्या नाम दिया जाए। तो हैंसन डिजीज जो बोलते हैं, क्योंकि जो लेप्रोसी का जो बैक्टीरिया है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे नाम का जो जंतु होता है, जो विषाणु होता है, नॉर्वे के जो नॉर्वेल हैंसन्स ने उन्होंने उसको ढूंढ के निकाला था, तो इसलिए उनके नाम से उसको कुछ लोग हैंसन डिजीज कहते हैं। लेकिन उसको अगर, क्योंकि हम लोग उस पर्सन को डिग्निटी भी प्रोवाइड करनी है, क्योंकि कुछ लोग लेपर्स बोलते पुराने जमाने में, लेकिन उसको अगर पर्टिकुलर अगर उसका अगर मतलब रिस्पेक्टफुल अगर नाम देखा जाए तो पर्सन अफेक्टेड बाय लेप्रोसी ऐसा कहा जाता है। तो वही हम लोग यूज करते हैं। थैंक यू फॉर दिस टाइम एंड आई होप कि मैंने ब्रीफ में मेरे बारे में शेयर किया। तो अगर यहाँ तक कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर हम आगे जाएंगे या फिर आखिरी में सवाल लेंगे। अप टू यू दीपा मैम प्लीज। Thank you. Now, yes, it is a bit clear, but थोड़ा सा आपका ऑडियो फिर भी डिस्टर्बेंस आ रहा था, पता नहीं बाकी लोग कैसे फील कर रहे हैं। Is it only for me or everyone else is feeling that way? But we can go for the session. Everyone can hear? Namrata? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Okay, then we just go ahead, probably because it's my issue only. सुरेश जी, थैंक यू सो मच। इनफैक्ट सब लोगों को ये बताना चाहूंगी कि जैसे इनके कहानी, मतलब जो अभी सर बता रहे थे, दिस इज नॉट अ सिंगल पर्सन, कोई जैसे आप इट्स नॉट अ सिंगल पर्सन स्टोरी, दिस इज एक्चुअली very sample for you all about how the kind of struggles that people affected or even people cured by leprosy go through in India. You can see from his own story how he almost contemplated beggary and the way why he had to drop out of education, and also the struggle to join the education system and come out of it successfully, and his evolution as a person affected
and growing on to become an activist, and currently where he is now being a global at the global policy level, part of ILF Federation, and also at India level, country level, where he's able to participate in national discourses and also policy level contributions. So in a way, this is a journey that you can see, like his one person's story is for you the story of what is happening over the past 2-3 decades with leprosy community in India. This is like a snapshot example of what is actually happening with the community, and it's wonderfully he depicted. And I just wish the audio was more clear, because I had heard him speak in other platforms, and अभी फिलहाल हमारे audio उतना अच्छा नहीं है, but we whatever I could like really understand, because I know the story well. And I hope if there is any disturbance with audio or kind of कोई disturbance है तो आप बताइएगा, ताकि हम लोग ठीक करने के लिए कोशिश कर सकते हैं. And I'm going on to the session next. So for me, yes, you clarified the terminology, because एक तो Hansen's disease survivor बोला जाता है in globally, and in India we call it leprosy cured as well as leprosy affected. And as you explained in his story also, it was clear, leprosy cured is the terminology that we use for those affected and currently cured, no longer transmissible. And affected are people who are coming under both the classification. Am I correct, Suresh ji? Yes, ma'am. Actually, as per our PWD or RPD Act, there is a category mentioned leprosy cured. But usually we are calling person affected by leprosy. Exactly. So that is the terminology that is used. Yeah. Many people are using lepers, but lepers is stigmatized. So we have to stop that, because now we are working on that also. Exactly. So leper, even now if you Google it and see, there are even Times of India का news अभी 2021 में आया था, they called lepers करके. So there is lack of complete awareness about terminology. And I also would like to add one more terminology which Suresh ji himself is part of. It's called champions. So within leprosy community globally, champions are those who are themselves survivors of the disease and also now currently doing advocacy and activism. And Suresh ji himself is part of the champion groups across global level in other countries also. Let me just go to the other question now. We covered, so can you just tell us like very briefly, before we go on to other questions, बाकी हम questions जाने से पहले, discussion points जाने से पहले, अभी का status क्या है? क्योंकि leprosy के ऊपर एक controversy, पता नहीं यहाँ के students जान रहे हैं या professors कोई हैं तो उनको idea होगा, especially कोई health systems में पढ़ने वाले कोई students हैं तो idea होगा. पहले WHO ने leprosy is completely cured in India, completely eradicated in India करके एक time था जहाँ पे जब leprosy eradicated in India, that kind of a status was there. And then finally around 2000s, early 2000, the status reversed. And so India government accepted that, yeah, we have leprosy cases and newly affected persons also coming up. So there was this controversy about the status itself in India. So can you a little bit very briefly talk about the status in India and about this kind of a controversy we went through as our government refused to acknowledge earlier, and ये सब इसका कुछ status के बारे में कुछ बता दें. हाँ जी. Actually 2005 में अपने गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था कि लेप्रोसी नहीं है हमारे देश में. उसके बाद में कुछ साल तक मतलब मैं खुद फील्ड में काम करता हूँ, तो लेप्रोसी अगर होते भी थे केसेस तो उनको रजिस्टर नहीं किया जाता था. तो मतलब गवर्नमेंट को डिक्लेयर किया था कि लेप्रोसी खत्म हो चुका है. तब 2008 में मैंने एक टाइम्स ऑफ इंडिया को मेरा एक इंटरव्यू दिया था. उनको बताया था कि अगर इस तरह से हम लोग लेप्रोसी को छुपाएंगे तो लेप्रोसी विल बी लाइक हिडन बॉम्ब, एक दिन फट जाएगा. तो फिर बीच में 4-5 साल तक केसेस रिकॉर्ड नहीं किया गया या कुछ भी उनकी इश्यूज हो गए. लेकिन फिर 2010 के बाद अगर हम देखेंगे तो फिर केसेस वहाँ पे बहुत ज्यादा रिपोर्ट करने लगे. और अभी इसलिए अगर 8-10 साल का भी आप रिकॉर्ड लेंगे तो हर साल अपने देश में नए केसेस जो है 1,25,000 के ऊपर ही नए केसेस आ रहे हैं. उसमें 10% जो है छोटे बच्चे होते हैं. छोटे बच्चे मतलब क्योंकि लेप्रोसी का इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है मिनिमम 3 to 5 years का होता है. तो इसका मतलब छोटे बच्चे अगर अफेक्टेड हो रहे हैं लेप्रोसी से तो ट्रांसमिशन ताजा हो रहा है. तो मतलब अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि सोसाइटी में जो ट्रीटमेंट ना लिए हुए घूम रहे, उनकी वजह से उनको ट्रांसमिशन हो रहा है. तो पिछले अगर 8-10 साल का आप डेटा देखेंगे तो हर साल 1.25 लाख से ऊपर ज्यादा केसेस आइडेंटिफाई हो रहे हैं. हमारा देश अगर भारत का अगर उदाहरण लिया जाए तो पूरे वर्ल्ड में जितना लेप्रोसी का पॉपुलेशन है उसका 60% हमारे देश में है लेप्रोसी बर्डन. यस मैम. Thank you so much. This is what I wanted to highlight.
that India has currently 60% of global leprosy population, and also this entire controversy where government for a while Indian government did not want to accept that leprosy is still there in India, बल्कि new cases होते हुए भी एक तो है कि जो already affected हैं वो अभी leprosy cured category में आएंगे, जो non transmissible हैं, they are already cured, but still they are you will see them in the leprosy colonies and everywhere, a lot of leprosy colonies in India जहाँ पे cured हैं, अभी non transmissible हैं, they can lead a normal family life, but still a normal social family life, but still they are segregated in all these various colonies. And apart from that, government was refusing for a while to accept that there was no new cases, there was even new cases, that kind of a thing was going on, but now it's all clarified, and we are acknowledging openly that the status is coming up, and we also, the numbers are also, like how Sureshji said, even children are getting new cases are coming up, which means more important for everyone, especially those working in disability rights community, to be aware of and to know about the context very clearly actually. And I'll just pause here for a minute to ask everyone, do you understand now the difference between leprosy cured and currently being affected patients, or does this need to be clear? Because it's very important that you understand the difference actually. Leprosy government के जो RPD Act में 21 types of disabilities में it is not mentioned as people affected by Hansen's disease. It is mentioned very clearly leprosy cured. So do you understand this? Because the next question is going to be on stigma, so which is very connected to the whole thing about what is this leprosy cured. So I'll just pause here to ask audience a question. Please tell me if you are clear on what is this leprosy cured versus leprosy affected, currently the patients that we are talking about, newly affected. Can someone tell me if everything's clear so far? Namrata, Reema? Yes, ma'am. So you know the difference, right? Like you're clear that leprosy cured are those people who already got affected and who have probably the limbs affected or lymph, as you see in the pictures, mostly in a lot of stories about leprosy in newspaper and everywhere. So those are leprosy cured, no longer transmissible, versus those who are newly affected and the patients actually. So these are the two types of population that is currently under the focus. So I'm going to the next topic. Again, this is very close to, I know Sureshji, close to his heart, and also very important for people in India also, like to, in terms of perspective of awareness and creating awareness basically. It's about stigma. So what is it stigma and how it affects the community basically, for instance, in terms of marriage or access to education, and even the very bad thing that even those who are cured, who are no longer transmissible, being still out of the community. And can you talk about that, Suresh ji, थोड़ा सा stigma के बारे में, और जो leprosy colonies हैं अभी जो, this is a status which is very common, very unique only to India, that we have these entire villages and colonies of people who are quarantined. जब हम लोग अभी क्वारंटाइन के बारे में बात कर रहे हैं, 6 महीने 7 महीने क्वारंटाइन, कितना दिक्कत हुआ हम लोगों को, और एक पॉपुलेशन है जो लाइफ टाइम क्वारंटाइन में बीत रही है. They are spending their entire life in quarantine away from the village and in pocket colonies. So can you talk a little bit about stigma और stigma के बारे में और leprosy colonies और ये type of social exclusion के बारे में थोड़ा सा बताइए. Yes ma'am, yes ma'am. स्टिग्मा जो है, जो भेदभाव जो है लेप्रोसी के साथ बहुत पुराना पहले से है, और अपने भारत में मोर देन 800 लेप्रोसी कॉलोनीज है. अगर 20-25 साल पहले की अगर बात देखेंगे तो उस समय अगर किसी को लेप्रोसी होता था तो मोस्टली वो बाहर जाता था, तो वो कॉलोनी में रहते थे. उस तरह से उस समय कॉलोनीज बनी है और वो लोग वहाँ पे रहते हैं. और ये जो क्वारंटाइन की जो बात की, इसके ऊपर लास्ट ईयर एक वीडियो भी बनाया था हम लोगों ने, कि जब ये क्वारंटाइन रहने की बात आई, किसी को लगा कि 40 दिन हम कैसे रहेंगे, 21 दिन के कैसे, जो भी जिनका क्वारंटाइन का जो पीरियड था. लेकिन लेप्रोसी ऐसे लोग हैं जो बचपन, मतलब जब से उनको लेप्रोसी हुआ है, पूरा लाइफ क्वारंटाइन में उनको अलग रखा गया है. तो ये होता है. और ये कॉलोनीज में जो लोग रह रहे, तो जो पुराना जब लेप्रोसी था उस समय ट्रीटमेंट नहीं था, क्योंकि पहली बार जो ट्रीटमेंट आई, डैप्सोन नाम की जो दवाई आई, वो 1951 में आई. जो दवाई थी वो जिंदगी भर खाना पड़ता था लेप्रोसी लोगों को. उसके बाद में 83 में MDT, मल्टी ड्रग थेरेपी नाम की दवाई आई, और ये पूरा क्योर करती है लेप्रोसी को, 100% क्योर होता है. लेकिन अवेयरनेस नहीं है, या लोगों में इसकी जानकारी नहीं है, या जिस तरह से अगर मान के चलो कि लेप्रोसी हो गया
और वो लेट डायग्नोस हुआ, फिर लेट ट्रीटमेंट किया तो डिफॉर्मिटी आ जाती है, किसी को उंगलियां झड़ती है, किसी का नाक बैठता है, ये पुराना अल्सर होता है, ये पुराने समय में होता था, तो वो थोड़ा दिखने में अजीब दिखता है। तो अगर मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, जब जहाँ मैं बात करता हूँ, तो किसी घर को आग लग गई, आग लगी है, आग लग गई थी और वो आग बुझ गई, 8 दिन 15 दिन के बाद हम लोग वो घर में जाके देखेंगे, वहाँ पे थोड़े काले दाग दिखेंगे, दरवाजा जला हुआ दिखेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, आग लग गई थी, आग लगी है ऐसा नहीं बोलेंगे। तो ऐसा है कि लेप्रोसी हुआ था, अभी नहीं है, और वो लोग पूरे ठीक हो चुके हैं, वो पूरे क्योर्ड हो चुके हैं, उनकी ओर से किसी को कोई संसर्ग नहीं होने वाला है। लेकिन जो दिखता है या हमने पहले जो सुना है, तो ये बहुत ज्यादा स्टिग्मेटाइज करता है और ये ज्यादा भेदभाव फैलाता है। शादियाँ, जैसा कि मेरे खुद का एग्जांपल है कि मैंने बताया नहीं मेरे स्टोरी में, तो मैं जब गांव में मुझे लेप्रोसी हुआ था, उसके बाद में मैं ठीक हो गया और फिर मैं सक्सेसफुल भी था, प्लेसमेंट ऑफिसर था। जब 2008 में मेरी शादी की बात चल रही थी, तो 2008 से लेकर 2010 तक मोर देन 30 लड़कियां देखने के लिए मुझे, मतलब मेरी मम्मी लेके गई कि ये लड़की देखना है, लेकिन सब लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया क्योंकि मुझे लेप्रोसी था। शादी के लिए मुझे ही नहीं, तो मेरी बहनों की भी शादी नहीं हो रही थी। और फिर उसके बाद में जब मुझे समझ में आया कि ये मुझे इसके लिए काम करना पड़ेगा, तो जब मेरी 2 बहनों की शादी जो मैंने की, जो मेडिकल फील्ड के लोग, दोनों भी फार्मासिस्ट थे, तो उनको पहले ही बताया कि आपको मालूम है लेप्रोसी क्योर होता है, तो बोले हाँ। तो इस तरह से जो खुद की शादी के लिए तो दिक्कत होती है, लेकिन उनके रिलेटिव्स, मतलब उनके भाई बहन की शादी के लिए प्रॉब्लम होता है। आज भी हमारे हॉस्पिटल में, मैं अभी हॉस्पिटल में काम करता हूँ, हमारा लेप्रोसी मिशन का हॉस्पिटल है, और आज भी ऐसा देखने के लिए मिलता है, जैसे 2 साल हो गए कोरोना है, लेकिन कुछ बुजुर्ग लोग आते हैं हमारे हॉस्पिटल में, बोलते हैं कि हमको एडमिट करो, और जब हम देखते हैं, हमको बोलते हैं आपको कोई तकलीफ नहीं है, कोई अल्सर नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, फिर क्यों एडमिट होना चाहते हैं। तो वो जो बताते हैं वो बड़ा टचिंग होता है। वो बोलते हैं कि घर में मेरी बेटी की शादी होने वाली है, मेरे बेटे की शादी होने वाली है, तो मैं वहाँ रहूंगा तो प्रॉब्लम आ जाएगा, तो मैं इसके लिए 2 महीना यहाँ पे रहूंगा, जब उनकी शादी हो जाएगी तो फिर मैं वापस चला जाऊंगा। तो इस तरह से स्टिग्मा है। लेकिन मैं इतना बताना चाहूंगा कि जो 20-25 साल पहले जो स्टिग्मा था और आज की तारीख में कम होते गया है, लेकिन पूरा खत्म नहीं हुआ है। तो स्टिग्मा है, बट अभी थोड़ा लेवल्स कम होते जा रहे हैं, इसके लिए हमें और अवेयरनेस के ऊपर काम करना पड़ेगा, स्टिग्मा रिडक्शन के लिए काम करना पड़ेगा। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग दिस। और आप सही बोले हैं कि स्टिग्मा थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, मगर बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ। इवन आई कैन शेयर, मेरा भी एक एग्जांपल है। मैं ज़्यादा बिहार में ट्रेनिंग देती थी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, डिसेबिलिटी मतलब हम लोग डिपार्टमेंट के अंदर रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर उनके ऑफिशियल्स, कम्युनिटी लेवल कैडर्स एंड ऑफिशियल्स को हम ट्रेनिंग देते थे, जिसमें एक बार क्वेश्चन आया मुझे, कोई पूछ रहे थे जो डिसेबिलिटी में काम करने के लिए हम आइडेंटिफाई करके ट्रेनिंग दे रहे थे उनको। और so one of the people who are going to work on disability issues at the community level, they are asking me कि मैम आप कैसे आप बोल सकते हैं हमें कि लेप्रेसी भी एक टाइप है, कि लेप्रेसी क्योर्ड सर्वाइवर्स इसमें डिसेबिलिटी में एक पार्ट है, तो हम जाके कैसे, हम भी परिवार के हैं, हम भी हमारे भी बच्चे हैं, और आप बोल रहे हैं कि आई शुड गो ऑन वर्क इन सच फैमिलीज। और तो हाउ कैन आई डू दैट, बिकॉज मैं भी खुद परिवार की हूँ और मेरे भी बच्चे हैं, सो आई कैन नॉट डू दिस। So in spite of the training, there is and in spite of the fact that you're already working for disability rights, there is a lot of this lack of awareness that this fear is still a factor actually. और जो आपने बोले शादी के बारे में कि not only your marriage, even आपके बहनों की शादी भी दिक्कत हो रही थी, that is also very much true. And also the example of आग था मगर अभी नहीं, आग मतलब the very fact example of there was a fire, that is the once upon a time this person had leprosy, and the effects are still, you can see the black suit and everything in the house, the effect is still on the body, but this person is no longer transmissible, this person is no longer going to transmit the disease, or in any case he's not there is no need to fear the leprosy kind of a context in that person, but still the stigma is what he has to live with, he or she has to live with for lifelong, and which is a reality in India. Thank you for clarifying that. And just one more question, because यहाँ के बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं आरपीडी एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में काम कर रहे हैं और उनको थोड़ा सा आइडिया भी है और राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज 2016 एक्ट में। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई वांट टू जस्ट पोस्ट सम क्वेश्चंस, क्योंकि मुझे पता है आप कम्युनिटी में काम कर रहे हैं एंड यू हैव लॉट ऑफ एक्सपोजर एंड प्रैक्टिकल नॉलेज ऑन वर्किंग डायरेक्टली विद कम्युनिटी, स्पेशली एक्सेस टू राइट्स के बारे में। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत जो लोग नहीं जानते हैं बाहर के, मतलब जो लेप्रोसी राइट्स के जो बाहर काम करते हैं, इवन विद इन डिसेबिलिटी राइट्स, पीपल डू नॉट नो द
सर्टिफिकेशन इशू, यहाँ पे हमारे बीच में बहुत सारे रिसर्चर्स होंगे who might be interested on access to certificate and the whole problem of disability certificate issues. और इस context में can you explain a little bit about what the community is facing issue within the RPD Act access to entitlements? For instance, to start with disability certificate के context में क्या क्या दिक्कत आती है community level में लोगों को, और classification में क्योंकि आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट एक्सेस, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है इसीलिए सर्टिफिकेट नहीं है, वो अलग बात है, वो रूरल पॉवर्टी कॉन्टेक्स्ट में that is there throughout all types of disabilities. But I am specifically asking in the context of why there is this kind of a confusion even among officials के बीच में बहुत सारे confusions हैं, और उस context में in terms of classification identification with regard to RPD Act. Can you explain a little bit? Yes ma'am. एक्चुअली आरपीडी एक्ट तो 2016 में आया, उसके पहले पीडब्ल्यूडी एक्ट था, पर्सनल विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995। उसमें 7 प्रकार की विकलांगता को डिफाइन किया गया था, उसमें भी लेप्रोसी क्योर्ड था, और अभी आरपीडी एक्ट में भी लेप्रोसी क्योर्ड है जो 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी है। तो अभी भी सर्टिफिकेशन के लिए बहुत इश्यू होते हैं, उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, और जैसा कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग उसका प्रोविजन है, जैसे कि सर्टिफिकेट होता है डिसेबिलिटी को, उसके बाद में उनको पेंशन मिलता है जो महाराष्ट्र में 1000 रुपीज है, तो वो नहीं मिलता है, या फिर उनको रेशन के लिए होता है, लाइवलीहुड लोन होते हैं। सर्टिफिकेशन जो है लेप्रोसी का सर्टिफिकेशन, अभी भी उसमें दिक्कत आती है, और उसमें कहीं भी कॉन्क्रीट गाइडलाइंस है या उसको फॉलो नहीं किया जाता है, वो अलग इश्यू, उसको हमें देखना पड़ेगा। लेकिन अभी भी अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाते हैं, हमारे लेप्रोसी साथी उनको भेजते हैं, तो वहाँ पे ऑफिसर जो होते हैं बोलते हैं विजिबल डिफॉर्मिटी दिखाओ। अगर विजिबल डिफॉर्मिटी दिखाना है तो फिर लोकोमोटर किस लिए, लोकोमोटर में आ जाएगा। तो लेप्रोसी का ये है कि इसमें विजिबल तो होना चाहिए, लेकिन अगर आप आरपी या पीडब्ल्यूडी एक्ट दोनों भी देखेंगे, उसमें सेंसरी लॉस को भी काउंट करना है, इस तरह से दिया गया है। मान के चलो कि अगर मेरा एक हाथ है और उसको सेंसरी नहीं, सेंसेशन नहीं है, क्योंकि लेप्रोसी जो बैक्टीरिया होता है वो नर्व पे डैमेज करता है, और उसके बाद में जो फंक्शन जो है कि हम गर्म चीज को छुएंगे तो पता चलता है कि गर्म है या ठंडा है, लेकिन वो सेंसेशन नहीं होता है। तो फ्यूचर में कभी भी उनको उसमें डैमेज हो सकता है, अल्सर हो सकता है, तो सेंसरी लॉस भी इसको काउंट होना चाहिए, वो नहीं होता है। दूसरा ये कि फंक्शनल जो होता है, जैसे कि एक फिंगर होता है, अगर थंब है उसका 15% माना जाता है, अगर देखा जाए गाइडलाइन देखा जाए, अगर थंब नहीं मतलब 15% डिसेबिलिटी है, तो ये पूरा हाथ में, तो एक हाथ में हम बोले कि कम से कम 40% तो दे दो, लेकिन वो नहीं होता है, वापिस भेज देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि विजिबल डिफॉर्मिटी नहीं है, या सेंसरी लॉस का ज्यादा नॉलेज नहीं है, या अवेयरनेस नहीं है गवर्नमेंट ऑफिसर्स में, और इसका कोई प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं बना है। मैं हर जगह ये बोलता हूँ कि सर्टिफिकेट नहीं। और उसके बाद में क्या होता है कि मान के चलो कि अगर मैं लेप्रोसी हूँ, मेरे गांव में मुझे लेप्रोसी था, मैंने फेस किया, स्टिग्मा बहुत है, मुझे गांव में तो एंट्री भी नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे जैसे जो गांव में जाएंगे तो उनको वो उस तरह से वो इनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। वो सारा चीज मैंने फेस किया, लेकिन मुझे सिर्फ विजिबल डिफॉर्मिटी नहीं है, इसलिए मुझे ना डिसेबल माना जा रहा है, तो गाँव के लोग मुझे लेप्रोसी मानते हैं, तो दोनों जगह से मुश्किल होती है। और वो सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो आगे का चीज जो उसका बेनिफिट्स मिलना है तो नहीं मिलता है, पेंशन नहीं मिलता है, उनको लाइवलीहुड लोन नहीं मिलता है, उनको डीपीओ में नहीं लिया जाता है, एसएलआरएम से लोन मिलता है डीपीओ को, सारी बातों से वो छूटते हैं। तो हमको दिख रहा है कि सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है, उसके जो परिणाम जो है वो बहुत ज्यादा है, आगे तक मतलब उनका नुकसान हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उसको किस तरह से हाईलाइट किया जाए, तो सबको मिलकर सोचना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। एंड थोड़ा सा ये भी बता दीजिए, बहुत सारे लोग नहीं जान रहे हैं ग्रेड 0 और ग्रेड 1 का जो कंफ्यूजन है, वो भी थोड़ा सा क्योंकि हम लोग यहाँ अवेयरनेस देने आए हैं तो वो भी दे देते हैं अवेयरनेस कि क्या कंफ्यूजन है अथॉरिटीज के बीच में। अथॉरिटीज के जो स्टेट टू स्टेट बहुत सारा डाइवर्स इश्यूज हैं सर्टिफिकेट में, और ग्रेड 0 करके ग्रेड 1 करके ये जो डिवीजन है, कैन यू एक्सप्लेन दिस कंफ्यूजन? एक्चुअली उसमें तीन ग्रेड्स देखा जाता है, 0 ग्रेड, ग्रेड 1, ग्रेड 2 डिसेबिलिटी। उसमें लेप्रोसी में क्या होता है कि जो डिफॉर्मिटी आती है, एक तो हाथों में आ जाती है, हाथ उंगलियां क्लॉ हो जाती है, दूसरा पैरों में आती है, फुट ड्रॉप होता है, जैसा कि वो घोड़ा जैसा चलता है ना, तो जो नर्व्स है वो डैमेज करके वो घोड़े जैसा चलता है, उसको फुट ड्रॉप बोलते हैं। वो फुट में आती है डिफॉर्मिटी या अल्सर होता है, उस तरह से होता है। तीसरा ये है कि जो आंख हम बंद करते हैं, लैग ऑफ थैलेमस जिसको कहते हैं, हमको बोलेंगे आंख बंद करो, बंद हो जाएगा, लेकिन लेप्रोसी में वो नर्व डैमेज होने की वजह से वो आंख बंद नहीं कर पाते, तो लैग ऑफ थैलेमस आता है। फिर रात को अगर वो सो भी जाए तो उसका आंख खुला रहता है,
फिर कुछ 10 जाके कुछ होके ब्लाइंडनेस आने का चांस होता है। तो ये 3 प्रकार की जो ग्रेड्स है, जीरो ग्रेड है, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 डिसेबिलिटी। तो ग्रेड 2 वालों को सिर्फ देते कि जो दिख रहा है, उंगलियां टेढ़ी है, पैर नहीं है, एम्पुटेशन हो चुका है, तो ये सिर्फ ग्रेड 2 को ही देते। उसमें भी अगर उनको विजिबल दिखा, बहुत सारे ग्रेड 2 डिसेबिलिटी को भी हम भेजते कि इसका मान के चलो कि एक हाथ का उंगली पूरा टेढ़ा है, पूरा झड़ा नहीं लेकिन टेढ़ा है, तो खुला हुआ है, तो बोलते हैं कि लेस देन 40% सर्टिफिकेट में डाल के उसको भेज दिया जाता है। ये सेंसरी लॉस काउंट नहीं होता है। उसको किसी का नोज बैठा है, किसी का आंख बंद नहीं होता है, उसको लैग ऑफ थर्मस बोलते हैं, या सिर्फ सेंसरी लॉस है, तो ये काउंट नहीं होता है। तो 3 ग्रेड है, लेकिन ग्रेड 2 को कुछ हद तक सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन बाकी जो है वो ग्रेड 0 और ग्रेड 1 तो मिलता ही नहीं। यस मैम, आई होप आई क्लियर दिस। हेलो, सॉरी, मैं फाइल अटैच कर रही थी, मेरा ऑडियो बंद था। यस, यू हैव क्लैरिफाइड इट। मैं जस्ट फॉर एवरीबॉडीज understanding, I'm going to attach a file on the WHO classification based on grade 1, grade 2, so that you might as well leave from here with full understanding. So sir ने जो बताए अभी सुरेश जी ने हमें explain किए, that is based on the WHO disability grading. I have attached the file for everyone. But thank you so much, वो बहुत clear था जो आपने explain किया. That is what exactly I wanted people to understand. और ये भी ऐड करना चाहूंगी कि ये जो अंडरस्टैंडिंग है, इवन दोज हु आर, सर विल आल्सो एक्सेप्ट, सुरेश जी मेरा बात मानेंगे क्योंकि उनका फील्ड एक्सपीरियंस बहुत है, दैट अथॉरिटीज जो सर्टिफिकेट देते हैं उनके पास ये क्लैरिफिकेशन, ये लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टिग्मा, लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंक्शनल लिमिटेशन, ये नहीं होने के कारण एक ही पर्सन को एक जगह पे सर्टिफिकेशन एक डॉक्टर के पास नहीं मिलेगा। तो समटाइम्स देयर इज आल्सो common practice that for them to repeat go another location, another person, and that time they might get a disability certificate. जी आप मेरी बात मान रहे हैं क्या? मतलब आपका भी एक्सपीरियंस ऐसे हुआ कि इतना कंफ्यूजन है अथॉरिटीज के बीच में कि समटाइम्स अथॉरिटीज लाइक are very diverse in giving certificate to the same person. Do you also see that in your experience? एक्चुअली पर्सन, वी कैन से पर्सन, बट हम लोग लोकेशन नहीं बोल सकते, क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसा प्रैक्टिस है कि जो सर्टिफिकेट है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिलता है। और अगर मान के चलो कि फॉर एग्जांपल मैं अमरावती डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो मुझे अमरावती डिस्ट्रिक्ट में ही सर्टिफिकेट मिलेगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, लेकिन पर्सन टू पर्सन होता है, क्योंकि अगर मेरा मूड है तो मैं दे दूंगा, ऐसा भी होता है। ऑफिसर वो बोले ऑफिसर मूड में था तो डाल दिया 40, ये भी होता है। दूसरा ये है कि अभी 21 टाइप्स आ गए, और अगर वहाँ पे आप सर्टिफिकेट के लिए जाते हैं तो कभी बोलेंगे आई का स्पेशलिस्ट आज नहीं है, अगर हियरिंग इम्पेयर हो जाता है तो कुछ ऑडियोमेट्री लेने वाला नहीं है, तो इस तरह से फिर वापस आना पड़ता है, फिर लोग नहीं जाते। मतलब नॉट ओनली लेप्रोसी, दूसरे डिसेबिलिटी के लोग भी। लेकिन ये पर्सन टू बिल्कुल डिपेंड हो रहा है कि अगर ये पर्सन को लगा या ऑफिसर को, वो दे देंगे। दूसरा है बोलेंगे पिछली बार तो वो था उन्होंने दिया था, तो ये होता है मैम। तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है या प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं है उनके पास, ऐसा बोल सकते हैं। Thank you so much. Thank you. This is what I wanted to elaborate a little bit more. And one thing that is very unique to you, क्योंकि मैं जहाँ पे हम लोगों को opportunity मिला आपसे discuss करने के लिए, और आपका जो unique point है, you are also globally connected. आप ILEP में हैं, and also you're connected in lot of global federations that are working in the issue of leprosy affected persons. So उस context में थोड़ा सा आपकी जो global knowledge है और contacts हैं इस field में, so I want to ask a little bit more on that context, if it's okay. एक क्वेश्चन है कि ग्लोबली आप क्या ट्रेंड देख रहे हैं? इंडिया के बारे में अभी हम डिस्कस किए, मगर बाकी कंट्रीज में जहां पर एज पर नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज के क्लासिफिकेशन, WHO के क्लासिफिकेशन के अंडर, दिस इज आल्सो इन साउथ अमेरिका, लाइक कंट्रीज लाइक ब्राजील एंड similar countries, and also in Africa in addition to India. So can you also little bit elaborate on the context in other countries, what you see, and also global policy trends internationally, क्या क्या trend है, what India could do better, what other countries you saw best practice? तो आपके जो ग्लोबल नॉलेज के मुताबिक उस वो थोड़ा सा शेयर कीजिएगा, आप क्या देख रहे हैं बाकी कंट्रीज में, because you have also traveled a lot to other countries and been part of a lot of delegate and represented India in this issue in a lot of context. So आपको आपके नॉलेज बहुत अच्छा होगा क्योंकि आप सुन पा रहे हैं उनके बाकी कंट्रीज के जो प्रेजेंटेशंस आपने सुना होगा,
और अभी भी recently भी you had been part of a lot of discussion, so please tell us about the global context a little bit actually. यस यस मैम, एक्चुअली लेप्रोसी जो है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि सबसे ज्यादा लेप्रोसी केस बर्डन हमारे इंडिया में है। सेकंड नंबर पे ब्राजील आता है, फिर अफ्रीकन देशों में लेप्रोसी है, और जो एशियन जो है हमारा नेपाल है, इंडोनेशिया है, इस तरह के देशों में लेप्रोसी। बाकी यूरोप में, बाकी वो कंट्रीज में लेप्रोसी नहीं है कैसे। उसमें जब आपने कहा कि जो एक मैंने कहा कि जो हम लोग निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज में जो काम करते हैं, उसमें 20 टाइप्स 20 एंटिटीज है एज पर WHO, 20 निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है। उसमें हम लोग जो है कि जो ग्लोबल लेवल पे काम करें, पहले तो हम फोकस करें कि स्टिग्मा रिडक्शन के लिए, जो मैं आईलेब टेक्निकल कमीशन में भी हूँ, तो उसमें स्टिग्मा रिडक्शन के लिए बात करें। और स्टिग्मा अफ्रीकन कंट्री में भी स्टिग्मा है, नेपाल में भी है, जो ब्राजील में भी है। इवन मेरी एक फ्रेंड है जो हम लोग चैंपियन है बड़ी, लेकिन उनको लेप्रोसी होने की वजह से उनका जस्ट लास्ट मंथ डाइवोर्स हो गया। अपने देश में भी हम आएंगे आगे कि हमारे देश में भी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज है, तो बाकी कंट्रीज में भी हम रोक नहीं सके। हमने हमारे आंखों के सामने देखा कि उनका डाइवोर्स हो रहा है, हम लोग ये कहीं के नहीं रोक सके कि यहाँ पे इस तरह से कोई प्रावधान नहीं, या आप ये ग्राउंड पे डाइवोर्स नहीं दे सकते हो। तो स्टिग्मा है और स्टिग्मा पे हम काम करें। दूसरा ये है कि मेन फोकस है कि पार्टिसिपेशन पे ज्यादा काम करें, और हम लोगों ने जो मैं वो ग्रुप में हूँ, पार्टिसिपेशन इंक्लूजन एंड ह्यूमन राइट्स ग्रुप में, हमने पार्टिसिपेशन स्टेटमेंट एक लॉन्च किया लास्ट ईयर, जिसको एनटीजे ने भी एक्सेप्ट किया है, WHO ने भी उसको एक्सेप्ट किया है। तो अभी जब तक पार्टिसिपेशन, इफेक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होगा, तब तक लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। और फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान के चलो कि मेरे गांव का मैं एग्जाम्पल देता हूँ, तो ये कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड भी है। मेरे गांव में जो लोगों ने मुझे स्टिग्माटाइज किया था, जिन लोगों ने मुझे भेदभाव किया था, आज वो मुझे अलग अलग जगह में, अलग अलग देशों में ट्रैवल करते हुए देखते हैं। तो अभी वो स्टिग्मा वो भूल गए। बहुत सारा मेरे गांव में स्टिग्मा कम हो गया, अभी अप्रिशिएट करते, अभी वो बोलते कि वी आर प्राउड ऑफ यू। तो कहीं ना कहीं अगर पार्टिसिपेशन होता है, कहीं ना कहीं अगर वो पर्सन अर्निंग कर रहा है, कहीं ना कहीं वो पर्सन अपने पैरों पे खड़ा है, तो स्टिग्मा भी अभी डिपेंड कर रहा है। नॉट ओनली लेप्रोसी, डिसेबिलिटी भी होता है। अगर एक पर्सन को लेप्रोसी है और वो कुछ नहीं कर रहा है, तो ज्यादा स्टिग्मा फेस करेगा। अगर एक पर्सन है कि जिसको लेप्रोसी या बाकी डिसेबिलिटी है, अगर वो अर्निंग कर रहा है, तो उनको कम स्टिग्मा फेस करना पड़ेगा। ग्लोबल लेवल पे हम लोग अभी लाइवलीहुड के लिए भी काम कर रहे हैं कि अगर लाइवलीहुड को प्रमोट किया जाए, तो बिल्कुल हम लोग स्टिग्मा के लिए कम कर सकते हैं। तो ग्लोबल लेवल पे बहुत सारे काम हो रहे हैं स्टिग्मा रिडक्शन के लिए, पार्टिसिपेशन के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए। और ग्राउंड रियलिटी में आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट काम होना शुरू किया है। और बहुत सारे अभी अभी जो ग्रुप्स बने हैं, अभी जो फोरम्स बने हैं, उसमें मैंडेटरी होता है कि वो पर्सन अफेक्टेड हो। ऐसा नहीं कि हमारे लिए किसी ने, जो हमने सुना था नथिंग अबाउट अस विदाउट अस, तो अब ये ग्लोबल लेवल में भी हो रहा है कि अगर उस तरह का डिस्कशन होता है, तो वो लोगों को उसमें शामिल किया जाता है। तो लेप्रोसी हो या अलग अदर एंटिटीज हो, तो मतलब मुहिम चल पड़ी है। ये खुशी की बात है। थोड़ा ग्राउंड पे आने के लिए टाइम लगेगा, बट काम हो रहा है। Thank you so much. So I think we are kind of, I have some few more discussion topics to ask, but I'll pause it for now. मेरे लिए माइंड में ये था मेडिकल ट्रेंड भी पूछने के लिए कि ये ट्रीटमेंट के ट्रेंड क्या क्या नया, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कोई नया डिस्कशन आ रहा है इसमें, एक ट्रीटमेंट, न्यू टाइप ऑफ ट्रीटमेंट विच इज ऑल्सो काइंड ऑफ अंडर कंट्रोवर्सी एंड ऑल दैट। बट उस और ये भी पूछना चाह रही थी मैं, RPD एक्ट के अंदर या डिस्क्रिमिनेशन इन अदर लॉस, बेसिकली जो एग्जिस्टिंग डिसेबिलिटी राइट्स एक्ट छोड़ के बाकी जो इंडिया के लॉज हैं उसमें लेप्रोसी के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन है, ये दो तीन थीम मैं अभी पॉज कर रही हूँ. आई एम जस्ट पॉजिंग इट नाउ बिकॉज वी आर ऑल्सो, आई थिंक इंडिया टाइम नाउ इट्स अराउंड 6:15, सो आई जस्ट वांट टू पोस्ट शिफ्ट द डिस्कशन टुवर्ड्स द पार्टिसिपेंट्स अ लिटिल बिट, ताकि क्वेश्चंस अगर किसी के पास है, कुछ क्लियर नहीं हुआ, तो प्लीज आस्क questions so that we can clarify that and move forward rather than it becoming like just क्योंकि हम दोनों, मैं और सुरेश जी ऑलरेडी टॉपिक जानकारी, मतलब वी ऑलरेडी हैविंग सम काइंड ऑफ नॉलेज ऑन द कम्युनिटी लेवल, और हम ही बात कर रहे हैं, तो वी आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ मच द नॉलेज इज गेटिंग ट्रांसमिटेड वेरी क्लियरली टू यू. सो आई एम पॉजिंग इट हियर. मेरा जो फर्दर डिस्कशंस क्वेश्चंस जो है इसको फ्रीज करके आई एम ओपनिंग द फ्लोर टू द ऑडियंस नाउ. So please don't think anything is a bad question, even if it has already been discussed and it's not clear. Please ask it again so that we can explain with more examples. And अगर आपके topic of interest कुछ है इसमें, या
ज़्यादा जानना चाहेंगे किसी टॉपिक के ऊपर, वो समथिंग पिक योर इंटरेस्ट, आपके न्यूज़पेपर में आपने कुछ पढ़ा, कुछ भी हो, आई एम जस्ट पोजिंग इट टू यू एंड लेट अस मेक इट अ डिस्कशन फ्रॉम योर साइड फॉर अ वाइल, एंड फिर भी अगर उसके बाद में टाइम है तो मेरा जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो पूछूंगी मैं. So the audience is now, the floor is for the audience, the participants. So in fact, you have very good advantage that you have very less number of people in a way. It's not a very huge forum. You have only just 10-15 people here apart from the organizers. So there is definitely no reason why you should not ask us questions and get doubts clarified. Otherwise, it's just going to be a one-man, one or two people talking on the stage is not, it's not going to make justice actually. So I hope people start asking questions. Anything, just even about the discussion or जो cover नहीं हुआ कुछ भी आप पूछ सकते हैं, please. No one? I'm going to call out names. Mohan, Mohammed ji है, Manu, Kim Fernandez. Ma'am? Yeah, Hello? Mohan. Yeah, good evening. Ma'am, actually, I want to know again about that stigma and leprosy also. I'm not completely understand it. I won't be able to completely understand it. You mean from the level of stigma कि क्या stigma है वो understand नहीं कर पा रहे हैं क्या? Yes. Okay, सुरेश जी आपके क्वेश्चन मैं फ्लोट करने से पहले let me look for other people asking and फिर बाद में I am noting it down कि क्या doubts हैं, उसके बाद में I will float the floor to सुरेश जी. I think he got disconnected actually. और कोई है क्वेश्चंस पूछने वाले? Participants come up for the question. I think Suresh ji got disconnected, so if he's going to try to enter again, please. Hello, I am here, ma'am. Oh, yeah, you're here. Okay. Yeah. Okay. Anyone else? Hardik, and there is someone Galaxy 8, and I don't know, they didn't name their profile. Manu, Kim. Are you all listening, or you just put the screen on and then logged in and then went to do your other work? No, ma'am, we are all here and we are listening. Yeah, I know you are there, but I'm saying there is absolute pin drop silence. And guys, you can make this, because when you are going ahead and as you know, many of you, I can see some of you are already students in my course when I did this certificate of disability studies ka ek mera thing. Okay, Hardik says no question, because this is a very good opportunity. You're getting to interact with somebody who is actually thoroughbred, like one of the pure, genuine, on the field expert, and also a person who himself affected, and also someone known globally, and you're getting to interact with him directly and build a contact from here onwards for your further research and everything. So I don't want you to miss out this opportunity. Please engage with him as much as possible. I shouldn't be saying this so much actually. I mean, it doesn't make sense why I have to explain so much. For you to ask questions and engage further. Yeah, ma'am. Good evening. It's me, Abhay. Yes. Please tell me. Actually, I want to know the status of a student from a student who are suffering from leprosy, and what was the status in state-wise and all over India. Because sir was telling us that 60% of the global population is in India. So what about the student and education system for those students? Because leprosy is a very new topic for me. So, ma'am, please, sir already told his life of his studenthood and everything. But ma'am, what is the current status? Thank you. Yeah. Okay. Anyone else? I'm just marking it here. And Suresh ji is also, I'm sure, listening to your questions. I just want everyone, make it a discussion, guys, please. This is a respect also we give for the field activist who's sharing the time with us. So make it like a discussion. Thank you, Abhay, for your question. Thank you so much. There is only 6 more people here, so I'm going to assume all of you have just logged in and left to do other work.
No, ma'am, I don't think so. But I personally think you and Mr. Suresh have explained so thoroughly and so properly that I don't think many would be questioning it. So Namrata is being politically correct. Yeah, okay. So this is a good skill. Your moderating skills are very good. Though Okay, it's not so politically correct, I have listened what you have said, and it was quite satisfactory and very okay, much understanding. So okay. doubt होना मुश्किल होता है. ठीक है, okay, I will buy that. Okay, thank you. But still, it would have been much better if a lot of people. It became a much more discussion. But on a webinar web platform में हम जहाँ पे सबका वीडियो भी बंद है तो we cannot expect much. So I go with what you are saying. I accept that. Ma'am, So actually today is a working day, तो most probably वो भी reason हो सकता है and less attendees का, तो उस वजह से apologies कि no आपकी problem, इतनी no problem अच्छी at all speech about. कोई सुन नहीं पाया, नहीं but नहीं the नहीं ऐसे नहीं speech अटेंड would, your नहीं work नहीं. and your words would be listened by many more on YouTube. We have a channel Bhumika Trust, वहाँ पर भी इसको वीडियो को शेयर किया जाएगा and your work would be listened by many more and these things will acknowledged by many more people और वो बहुत अच्छे से इस बात को समझेंगे वहाँ पर. Okay, thank you. So Manu is also saying no questions. So I'll post these. Suresh ji ko, thank you Namrata. Let me post these two questions that has come. I'll also add some context and उसके बाद में I'll post these questions to Suresh ji. And एक तो stigma के बारे में who asked this? I think Mohan asked me this question that it was not very clear what kind of stigma we are talking about. And this is, it also is reflective because you guys, you're mostly, all of you are younger generation, and just starting with the context. So for me, this is a reflection of how the rest of the India or rest of the India, even educated communities are now probably also thinking about leprosy, because people might not understand the larger context of stigma very well, because those who are in the field, who are working with the community, especially if you go, I have myself been to leprosy colonies in Jharkhand, Bihar, Andhra Pradesh, currently now Telangana. So all these states, like a lot of states have leprosy colonies. So if you had opportunity to even visit the kind of injustice that our society has done to people who are already cured of leprosy, and there is absolutely no reason why any kind of discrimination should be there. It's, you can see how we are fearing COVID time, the fear of coronavirus, and the kind of quarantine that people who are affected with the virus got faced, right? But that you can understand because it's people who are affected and transmissible, like they are transmitting the virus. But in the case of leprosy, the stigma is mind-boggling when you understand the context. Actually, even educated people do not know that you're no longer transmissible. You're not in the picture of transmitting the disease anymore at all. It's been years and years before. The fire had been completely just old fire. It's been 10 years before, and you only have the remnant of the disability that is visible, like what you can see in pictures. If you Google and see on YouTube, on Google, if you can see the kind of the remnants of the disability is what scares the people most. People fear leprosy mostly by what is remaining out of the once upon a time being affected by leprosy, and the remnants that have been left on our body is what the society perceives as still transmissible. And kind of there had been a lot of, when Suresh was talking about livelihood, I can also give examples during my own visits to leprosy colonies, especially in Jharkhand, Dhanbad I had gone, and there was this people, they make bed sheets, like I think Suresh knows already all of this. They make this hand weaving. A lot of people do this handloom and weaving. And there was a time when the weaving products, the things that you're weaving, like your bed sheet and bedspread and your towels and napkins, these things were not being purchased by community members because they thought that purchasing these products will transmit the disease. Such kind of lack of awareness. Now at least thankfully they have supporters, and because of awareness and all that, so the business at least is running moderately. But the lack of awareness is mind-boggling to such an extent that a person affected with leprosy, their family members do not get married. Suresh, everything that we are talking about in the context of leprosy, Suresh ji ke kahani, khud ke kahani, unke story mein already hai. Matlab, he's already explained everything in his own story. And the stigma is in such a way that if you are visible, it's two kinds of stigma. One is if you are two kinds of issues. If you are visibly disabled, like
देखने में पता चल रहा है और आपको देखने में ही आपका डिसेबिलिटी पता चल रहा है, तो यू आर सोसाइटल वाइज यू आर डिस्क्रिमिनेटेड अ ग्रेट एक्सटेंट. You don't get married, or marriage is a big tough issue. Education, access to education is tough. Getting friends is tough. Like having social life, social circle, community level contacts, everything. But not having a visible disability, like how Suresh was explaining, is also a catch-22 situation where you don't have access to disability certificate and other things because you're not seen as a person suffering from any discrimination. Whereas your stigma is the same. As far as your society is concerned, if you have your functional limitations or your stigma, is the labeling is still the same at community level. And you yourself think, like you go home and today ask your mother if you know someone who's a leprosy cured person 10 साल के पहले का उनका, or you want to appoint them as your father के business में, या even just talk about employing them as a maid in your own house. Just open the topic like that. Just see what reactions you're getting from your own parents and your own grandparents. So that is the kind of stigma that we are talking about. And my interest is that at least people here, I was hoping that people here start talking about these issues, especially those who are already connected to disability rights topic, like how Bhumika Trust is doing, and especially student communities like you. And more particularly, I was interested to create awareness in Delhi based student circle, because mostly this is or not just Delhi, many metropolitan or major university circles, the awareness is very limited. Actually, it's still a community level discussion that's happening. Whatever is happening now in leprosy community, it's mostly just people who are already in the field at community level are talking about it. So I'll just open to Suresh ji little bit to add anything. अगर stigma के बारे में कुछ और add करना चाहेंगे तो cover करने के लिए मैं I'm opening the floor to him. थैंक यू. मोहन सर ने जो सवाल पूछा 2 साल की स्टिग्मा के बारे में, तो लेप्रोसी ये है कि लेप्रोसी कैसे होता है, जैसे कि पैच होता है शरीर पे जो स्किन से ऊपर रहता है, उसमें स्वेलिंग नहीं आता है, या उसमें बाल नहीं होते, या फिर उसमें कुछ सेंसेशन नहीं होता है, तो ये पहला स्टेज हो सकता है लेप्रोसी का. अगर वो स्टेज में अगर उसको ट्रीट किया जाए तो बिना कोई डिफॉर्मिटी का वो ठीक हो सकता है. लेकिन लोग छुपाते हैं क्योंकि स्टिग्मा है. जैसा कि दीपा मैडम ने बताया कि आपके घर में पूछो तो वो बता देंगे कि स्टिग्मा, उसको पहले महारोग या कुष्ठ रोग या रगत की, इस तरह से ना कोड़े की बीमारी बोला जाता था. पहला स्टेज हो सकता है. दूसरा है कि अगर किसी को अल्सर होता है वो ठीक नहीं हो रहा है, वो डायबिटीज में भी हो सकता है, लेकिन नॉन हीलिंग अल्सर रहता है. शरीर पे कुछ पेनफुल नोड्स आते हैं, या फिर जब मतलब ज्यादा बढ़ते जाता है तो नोज बैठ जाता है, आईब्रोज का जो बाल है वो झड़ जाता है, फुट ड्रॉप हो जाता है. तो ये बेसिक सिम्टम्स हो सकते हैं लेप्रोसी की. इसके द्वारा आप बोल सकते हैं कि ये पर्सन को लेप्रोसी. अगर लेकिन चट्टा होता है और उसको अगर तुरंत डायग्नोस किया जाए, तुरंत ट्रीटमेंट किया जाए, तो बिना कोई डिफॉर्मिटी का वो पर्सन ठीक हो सकता है. इसमें मेडिसिन की भी बात आ जाती है कि अगर 1 से 5 अगर चट्टे हैं तो उसको पीबी केस पॉसिडेसिलरी कहते हैं मेडिकल की भाषा में. उससे ज्यादा है तो मल्टीडेसिलरी. जो गवर्नमेंट का स्टेज है, जो मेडिसिन का जो प्रावधान है, अगर वो पीबी है तो उसको 6 महीना दवाई दिया जाता है एमडीटी, और उसको अगर एमबी केस के 5 से ज्यादा पैचेस है तो 1 साल दिया जाता है. लेकिन उसमें भी हमारा एक्सपीरियंस है, जो हम लोग लेप्रोसी मिशन में काम करते हैं, फिर कुछ साल के बाद वो पर्सन फिर वापस आ जाता है. अगर उसको पीबी सॉरी एमबी था, था, और उसको ज्यादा पैचेस के रिएक्शन था, और वो उसको गवर्नमेंट के हिसाब से अगर उसको 1 साल का दवाई दिया गया तो पूरे जो कीटाणु बोलेंगे हम लोग अपनी सादे भाषा में, तो नहीं मरते, या जिनके बाद वो फिर एक्टिव हो जाते हैं. फिर 4-5 साल के बाद तो पेशेंट फिर आ जाता है, केयर आफ्टर क्योर आ जाता है. तो ऐसा होने से क्या होता है, फिर लोगों को और डर हो जाता है, लोगों के मन में, जनरल लोगों के भी, पर्सन अफेक्टेड बाय लेप्रोसी की, लेप्रोसी ठीक नहीं होता है. तो लेप्रोसी मिशन में हम लोग 2 साल दवाई देते हैं. फिर हमारे इस तरह से हम लोग 2 साल दवाई देते हैं. लेकिन अभी और चर्चा चल रही कि वो 1 साल की जो बात हो रही थी उसको भी कम किया जाए. लेकिन मैंने तो खुद जब WHO की मीटिंग हो रही थी उसमें मैंने विरोध किया कि अगर इस तरह से CAC पेशेंट, मतलब जो ठीक होने के बाद हमने कहा कि RFT होगा, लेकिन उसके बाद में 4-5 साल के बाद आ जाएगा, तो जो हम स्टिग्मा के ऊपर काम किया है कि जो लेप्रोसी क्यूरेबल है, अनुवांशिक नहीं है, ठीक होता है, डिफॉर्मिटी के बगैर ठीक होता है, ये लोगों में फिर और डर बैठ जाएगा कि नहीं, लेप्रोसी क्यूरेबल नहीं है. उसके ऊपर हमें सोचने की जरूरत है. तो ये इस तरह से लेप्रोसी का जो बेसिक सिम्टम्स है वो होता है. स्टिग्मा जो है कि दीपा मैम ने बताया कि स्टिग्मा क्या है, कि मान के चलो कि अगर मुझे लेप्रोसी है, मेरे दोस्त लोगों को पता चल जाए, स्कूल में हूँ मैं, तो वो मेरे बेंच पे नहीं बैठेंगे, मेरे बाजू में नहीं बैठेंगे, दोपहर को लंच जब करेंगे तो मेरे साथ टिफिन नहीं खाएंगे. उनको लगेगा कि मुझे
मुझे लगेगा, इस तरह से डर होता है। दूसरा है कि दीपा मैम ने एग्जांपल दिया है कि वो बेडशीट या जो पावर लूम का जो कपड़ा बनता है वो खरीदते नहीं थे। सेम चीज हमने भी एक्सपीरियंस किया, हमने भी देखा कि जो हम लोग पीपल अफेक्टेड बाय लेप्रोसी है, उनको अगर लाइवलीहुड के लिए हम कुछ प्रावधान दिया जाए, तो मान के चलो कि उनको किराना दुकान लगा के दिया जाए, ग्रोसरी शॉप, तो लोग वहां से खरीदते नहीं थे। अभी सिचुएशन थोड़ी बदल रही है, लेकिन अगर मैं 5-10 साल पहले की बात करूँ तो ऐसा था कि उनकी दुकान से कोई खरीदता नहीं था। अगर वो होटल शुरू करे तो कोई जाएगा नहीं उनके पास। दूसरा, अगर मान के चलो कि किसी थोड़ा डिफॉर्मिटी किसी लेडी को, और वो कुछ उनके पास कोई काम नहीं, कोई जॉब नहीं, अगर हमारे घर में अगर मेड चाहिए तो क्या लोग रखेंगे? नहीं रखेंगे। उनकी उनसे कोई खतरा नहीं है, वो पूरी क्योर हो चुकी है। लेकिन ये होता है स्टिग्मा। दूसरा ये कि मान के चलो कि शादी है, वो बिल्कुल कोई डिफॉर्मिटी नहीं हो पर्सन को, जो लड़का हो या लड़की हो, क्योंकि लेप्रोसी हुआ था, गाँव के लोगों को मालूम है। तो आज भी अगर पुराने लोग अगर हम गाँव में देखेंगे, विलेजेस में, शादी करना है तो बोलते हैं कि उसका 3 जनरेशन चेक करो, किसी को कोड तो नहीं था, कोड मतलब लेप्रोसी तो नहीं था, इस तरह से चेक किया जाता है। तो ये स्टिग्मा है। तो वो जैसा कि लेप्रोसी कॉलोनी का एग्जांपल दिया गया, वो लोग कॉलोनी में है, वो ठीक हो चुकी है, उनसे कोई संसर्ग होने का बिल्कुल खतरा नहीं है, तो कॉलोनी में, फिर वो अपने गाँव में नहीं जाते। हमारे यहाँ पे पेशेंट हॉस्पिटल, जो हम यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल से लेप्रोसी मिशन के 50-60 साल से लोग लेप्रोसी लोग यहाँ पे रह रहे हैं, वो ठीक हो चुके हैं, लेकिन गाँव में उनको एंट्री नहीं है। इवन किसी की डेथ होती है तो उनके घर वाले आते भी नहीं उनका अंतिम संस्कार के लिए, तो हमको उनकी कास्ट के अनुसार करना पड़ता है। अगर मुस्लिम है तो उनको मुस्लिम कब्रिस्तान में लेके जाना पड़ेगा, अगर हिंदू है तो हिंदू की तरह। तो ये होता है स्टिग्मा कि जो मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रहे। इस तरह से उदाहरण आज भी हम देखते हैं, आज भी हम उसको समझ रहे हैं, देख पा रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो ये है लेप्रोसी और ये है स्टिग्मा। तो मोहन सर, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया प्लीज? सर इट मीन्स स्टिग्मा जो है, मतलब इसको लेप्रोसी है तो उससे जो मतलब उसके भी जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, लोग जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, क्या हम ये समझे कि उसको हम स्टिग्मा बोलते हैं? हाँ, लेप्रोसी हो गया तो उसको दूर रखेंगे, उसके साथ नहीं बैठेंगे, साथ नहीं खाएंगे, उसके घर वालों के साथ भी भेदभाव करेंगे, उनको किसी फैमिली फंक्शन में नहीं बुलाएंगे, उनकी शादी नहीं होगी, यार वो एजेड है तो उनके बच्चों की शादी नहीं होगी। तो सब चीजों को हम स्टिग्मा बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ लेप्रोसी। बाकी तो मैं तो हमेशा एक्सप्लेन करता हूँ, एक लाइन में बोलता हूँ कि लेप्रोसी के साथ स्टिग्माटाइज करना मतलब ऐसा उस पर्सन को पनिशमेंट देना जिसका कोई क्राइम है ही नहीं, उसने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन फिर उसको पनिशमेंट दे रहे हो। मैं इस तरह से कभी कभी डिफाइन करता हूँ स्टिग्मा को। ये सारी चीजें स्टिग्मा उसको कह सकते हैं। थैंक यू सो मच, दैट वाज एब्सोल्युटली लाइक इट। आपने अपने दिल की बात बताया, और बहुत सारा ये जो पेन है, दिस काइंड ऑफ स्टोरी, आई होप people are able to understand the context. It became more clear from what you said. Actually, I'm thankful for what you shared just now, because these are real realities, rural, not only in rural context, even educated people are like how you said the example of maid in our own home. So this kind of a context is very common in India, and I'm so thankful that I'm able to listen to what you have shared today here. And one more thing, any other context, Mohan, or anybody else in related to stigma? Anything if you want to share about your personal experience, or if you come across something that you want to share? Anyone? In that regard, ma'am, I have a question. Like it's like what I have just heard, and मतलब जितना भी मेरे समझ में आया और जो भी जितना भी मैं समझ पाया सुरेश जी की बातों से और आपकी बातों से, जो मेरे को समझ में आया, मेरे को तो एक तरीके से it's something like treated as untouchability, कि मतलब छुआछात से मतलब लेप्रोसी फैल जाएगा, या उसके आसपास बैठने से, या उनसे बात करने से, या उनके साथ खाना खाने से. It's something like that I have like understood what. Yes, sir. Yes. You are true. Yes, absolutely. You're right, actually. And also the fact that what is more painful for the leprosy community is that it is no longer transmissible. Like, it has happened 10 years before. I'm just a person with the visible remnants of the disease. The disease has left my body long back. And what I'm left with is just the visible remnants of the disease. And even then I'm considered transmissible, and my family for 3 generations are affected, actually. And it's not even a hereditary disease or anything, So the context is in a way, it's for people working under, it doesn't make sense at all. The kind of a stigma context is so insensitive that it doesn't make sense. And thank you. A lot of examples that Suresh ji gave was common across India.
and grassroots examples. You wouldn't know this unless you do field work yourself. So you're getting first-hand experience from his what he shared, and I'm thankful for that actually. And this connects in a way. Stigma is what I'm going to start with. Next question. I forget who asked this question. Abhay ji ne pucha tha na, Abhay. The question on education, right? Yes. Shall I answer that? Yeah. Yes, sir. हाँ, please. अभय सर ने जो पूछा कि एजुकेशन का जो लेप्रोसी में, तो मतलब तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैंने खुद देखा है कि स्कूल था, मतलब जब मैं काम कर रहा था, एक लड़की लेप्रोसी अफेक्टेड लड़की थी, तो उनका लेप्रोसी ठीक हो गया था और मैं उनको कॉलेज में एडमिशन के लिए, मेरा काम ही वही था कि प्लेसमेंट ऑफिसर था, तो मेरा काम था, तो उसका लेकिन चेहरे पे थोड़ा स्वेलिंग था, तो उस तरह से दिखता था कि उनको लेप्रोसी हुआ था। तो कॉलेज ने सीधा डिनाई कर दिया, 11th में उनका एडमिशन करना था और वो कॉलेज लेप्रोसी कॉलोनी के बाजू में ही था, लेकिन प्रिंसिपल ने उस समय इतना एडवोकेसी और ह्यूमन राइट्स में नहीं समझता था, 2008 की बात है, तो प्रिंसिपल ने सीधा मना कर दिया, बोले सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं इनको एडमिशन देने के लिए, लेकिन अगर मैं इनको एडमिशन दूंगा तो बाकी जो मेरे स्टूडेंट्स है, जो मेरा स्टूडेंट का स्ट्रेंथ है, उस पर अफेक्ट हो जाएगा और बच्चे लोग यहाँ पे नहीं आएंगे। तो उन्होंने सीधा मना कर दिया। उस समय मैंने भी वो बात मान ली, फिर वो जो लेडी है, जो गर्ल है, उनका दूसरी जगह एडमिशन कर दिया। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि हमने खुद लेप्रोसी मिशन में अनुभव किया है, जो लेप्रोसी कॉलोनी के जो बच्चे होते हैं उनको कुछ स्कूल का एडमिशन देते हैं, लेकिन उनको ये बताया जाता है कि आपने बोलना नहीं कि हम वो लेप्रोसी कॉलोनी से है। दूसरा एग्जाम्पल, जो पेरेंट्स मीटिंग होती है, उनको क्लियरली बताया जाता है कि आपको आपके पेरेंट्स को लेके नहीं आना है स्कूल में। तो इस तरह के जो स्टिग्मा के केसेस हमने देखे, खुद अनुभव किए, लेकिन ये मैं वही फिर से बोल रहा हूँ कि ये 5-10 साल पहले की बात है, अभी थोड़ा बदलाव आ रहा है, लेकिन फिर भी पूरे हद तक ये नहीं गए। मेरा एजुकेशन छोड़ने का कारण यही था कि सवाल पूछे जा रहे थे क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ, जो मतलब मुझे अननेसेसरी निग्लेक्ट किया जाता था। तो ये होता है कि मान के चलो कि किसको पता चला, पेरेंट्स को पता चला गया कि वो बच्चे को लेप्रोसी है, तो पेरेंट्स बोलेंगे कि उसके साथ नहीं खेलना है, तो ये ओपन नहीं होगा, ये कहीं लिखा नहीं होगा, लेकिन वो बच्चा फील करेगा कि मेरा दोस्त था, मेरे साथ खेल रहा था, लेकिन सडनली अभी ये बंद किया। तो ये स्टेजेस है स्टिग्मा के, हर स्टेज आपको ये नहीं दिखेगा कि मतलब रिटर्न फॉर्म में या आप उसको कुछ एविडेंस दे सकेंगे, लेकिन जो पर्सन जिसको है वो खुद फील कर सकता है ये स्टिग्माटाइज होता है। मैं आज भी जहाँ जाता हूँ मैं बताता हूँ, अभी तो मैं ओपन नहीं बताता हूँ, लेकिन कुछ जगह मुझे आज भी फील होता है कि क्या ये मुझे स्टिग्माटाइज तो नहीं कर रहे हैं। अगर मेरे ग्लास में पानी पिया तो क्या वो ग्लास का आ रहा है, मैं ऑब्जर्व करता हूँ, कभी कभी मुझे दिखता है कि ये ग्लास जो मेरा है सीधा किचन में जाके घासते होगी या पता नहीं क्या करते होगी। तो लेवल्स है, स्टिग्मा के लेवल्स है, वो किया जाता है, लेकिन अभी बदलाव आ रहा है, ये अच्छी बात है, थोड़ा बदलाव आ रहा है, मेंटेलिटी में चेंजेस आ रहे हैं, एजुकेटेड लोग हैं वो समझ रहे हैं, बदलाव आ रहा है, लेकिन स्टिग्मा आज भी सोसाइटी में स्टिग्मा एग्जिस्ट है। अभय सर, आपका सवाल का जवाब क्लियर हो गया सर? You explained it very well. I think he understood. You explained the context, क्योंकि इसमें नोटेबल पॉइंट ये है कि सुरेश जी ने जो अभी बताया उसमें बहुत नोटेबल पॉइंट ये है कि the question was asked on education of students who are affected by leprosy, but the social context that we are having in India is that not only the students affected are having issues with education, in the sense that you have to keep the disease even if identified in early stage also, you have to keep it a secret. Actually, most of the issues, the situation, the parents, they don't inform the schools or other families in case of students affected with leprosy, identified early, I mean. And second thing is very common and also very unique to leprosy situation in India is that it's only here we are having discrimination of parents who are affected by leprosy. Children are not having any kind of a disease or not even identified or anything, but the children being facing discrimination to get admission in school. You have to understand, parents are the ones who are affected, and they are the ones who are in leprosy colony or being discriminated by the society. And this I see, you can yourself go witness this in Nirmala Leprosy Hospital in Dhanbad in Jharkhand. You have the situation where the hospital is running a school which is run by Father Pani. Actually, I know you can Google it and see, or go, if any of you are from Jharkhand, you can do it. This is a field work actually. जहाँ पे hospital, the leprosy hospital is having a separate school, and the common sense will dictate that the school is for children affected, but no, the school is for children of those whose parents are affected actually.
those who are in the leprosy colonies nearby and people who are affected, उनके बच्चों के लिए अलग से स्कूल चलाना पड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चला रहा है स्कूल. That kind of a discrimination is what we are facing, where the society has started to or been discriminating not only people affected but also their children in such a way that children of people affected have not been having access to education. Forget about people affected having access, that is the core problem. But the second problem, which is also predominantly an Indian situation, is that where you have to run a separate, where you have a lot of situations where the NGOs working or organizations working with leprosy survivors are also having to run their own small vocational schools or organizational setup for education for those children also. Even those, they might not be having any disease, but still the discrimination is common. So he already covered that. सुरेश जी ने already बताया example के बारे में जहाँ पे उनके parents को मना कर रहे हैं आने में, मतलब a lot of issues where they are saying that don't tell the other parent, आप किसी को बाकी बच्चों को ना बताएं, किसी parents को ना बताएं, keep it as a secret. So it should be other way around, like whereas this opportunity should be used to create awareness for the other children and for other parents, बल्कि हम लोग उल्टा करते हैं, हम उसको छुपा के we keep it as a secret, and for us it is like just hide it under the carpet. That is the way India does everything actually. Thank you so much, and I'm really glad. More or less I think we covered everything. And कोई और question है क्या, या wrap up कर सकते हैं हम लोग session? Ma'am, अब ये बताएं. I'm audible? Yes, you're audible. Please tell me. मैम, जैसा कि आज सर और आपने मैम बहुत अच्छा डिस्कशन किया और सर ने बहुत ही अच्छा आंसर किया जो भी क्वेश्चन किए गए मैम. मैं जैसा कि आज पहली बार लेप्रेसी के बारे में इतना जान पाया हूँ, तो मैम मुझे लगता है कि जैसे कि पहले एक टाइम के पहले एड्स के बारे में एक अवेयरनेस कैंप चला हुआ था, एक कैंपेन चली हुई थी ऑल ओवर इंडिया, हम उसी तरीके से कुछ ऐसा कर सकते हैं, चाहे वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से ही हम शुरू करके और ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर दी वर्ल्ड इसके बारे में क्या हम लोग अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर सकते हैं क्या मैम? I think I'm seeing this effort itself, like what Bhumika Trust is doing itself is kind of a lot of efforts have been done. Even Suresh ji himself had been doing a lot of efforts to create awareness. And the only problem I see from as a person who is working on a larger disability context is that the discussions remain, the discussions that the leprosy related awareness remain within disability rights community. Even that awareness is very less. If you ask me, if you do a survey of all people who are already working with disability rights, and if you do a survey among them and check their awareness on leprosy issues, that itself we will be doing very poorly. Actually, I think that awareness is not there, even among 100% not there for all the people working with disability rights. And then we have to target education institutions and people who are generally in university circles. So I think the whole idea what people like, this team, like what Bhumika Trust is doing, these guys, youngsters who are running this organization now, students, yourself, and this is a kind of a starting point I see, because it's you're also targeting students, and hopefully this situation, this kind of a trend will follow in the coming years also. And people like you are listening to this and you're connecting with Suresh ji, and so you are going to create a new dynamic where you're contact with Delhi circles and your disability rights circles and all that. So it's going to spread that way. So the main intention of inviting Suresh ji today, even though I had informed him already, this is a purely a students platform. I explained to him it's just going to be students and not many people, but still he joined eagerly. And the reason I also showed interest mainly with all the ideas that are coming from the student team that are running the trust is basically this, to talk to audiences that have not heard about the issues before. Because so far in my own experience, we are only talking to the same audience. We talk to the community level, or we talk to people who are already in DPO circles and who are already in disability rights circles. So the whole idea is now, I think, to start discussing with people who are a little bit newer to the discussion. And like I see, most of you are this, you have accepted yourself that this is the first time you are hearing about the issue. So which I take it as a positive thing, which means that at least if we have talked to 10 people today, 10 people are going home with more awareness. For me, that's a win actually. 1 hour well spent. Suresh ji, आप कुछ बताना चाहेंगे? Yes, ma'am. Just I would like to add one thing only.
लाइक अभय जी ने जो कहा है कि उसके लिए कैसे काम किया जाए, एक्चुअली मैं ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ गवर्नमेंट पे या किसी पे, लेकिन क्या होता है ना कि ये कब इश्यू बन जाता है कि परसेंटेज, क्योंकि अभी आप अगर डेटा देखेंगे गवर्नमेंट का परसेंटेज में होता है, और जब बोलते हैं कि 10% है तो फिर फॉर एग्जाम्पल कि हम कुछ करेंगे, लेकिन लेप्रोसी का अगर आप डेटा देखेंगे कि मैंने इस तक कहा 1,20,000 या 1,30,000 नए केसेस पर ईयर आ रहे हैं, लेकिन हमारा अगर देश का पॉपुलेशन देखेंगे तो गवर्नमेंट के लिए एक ऑप्शन होता है बोलने के लिए कि लेस देन 1% है, तो ये हमारा पब्लिक इश्यू नहीं हो सकता है, तो हमें परसेंटेज छोड़ के नंबर पे आना पड़ेगा, तब जाके कुछ बात बनेगी। यहाँ पे स्टूडेंट से फ्यूचर में ये भी बात कर सकते हैं, तो हमें थोड़ा नंबर्स पे ध्यान देना पड़ेगा, ना कि परसेंटेज पे। परसेंटेज में देखेंगे तो बहुत लेस होता है, लेकिन एज ए नंबर देखेंगे तो ज्यादा हो सकता है। Yes, perfect. Exactly. That's a perfect response, actually. Thank you so much. Anybody else? No, ma'am, I don't think so. Way the you and sir explained, so I don't think the people have the more questions to ask from you or sir, or if they might be having, they can like text us or email us, so we can like forward those questions or their queries to you. And so, as we are almost to our end to this program, I hope no one has any questions. If you have any questions or any things to be discussed or asked, you can just type in the chat box as well, because it's already been talking. It's more than 1.5 an hour, and everyone must be like thinking when it will get over. So we are almost to the end. Before I proceed towards the a formal word of thanks to the speaker or to the guest. So before that, I would like to thank all my attendees who just came with a great enthusiasm and excitement and interest they showed in our this webinar. So thank you everyone for coming, to all the attendees, and especially thanks to the Bhumika Trust team, all my colleagues, all my juniors, seniors, everyone. So thanks to everyone, and a special mention to the General Secretary, Ms. Namrata Mishra, because although it was her birthday today, but she still managed to took out time for this trust and for us. So thank you, Namrata, for coming, and wish you a happy birthday also. So may hope you are good. Thank you so much, Jayant. So thanks. I wasn't expecting that so early. Okay. Thank you for being so late. So sorry for that, and I really apologize for that. And thank you for the thank you to Deepa ma'am and Suresh sir for giving us their precious time and just coming and just showing their interest and everything they showed, their interest, their excitement, and all the enthusiasm they showed, and they give us a lot of time to us in this still we are in a unlocking phase, but still we are locked at homes, and but we are discussing at such a wider level. So it's very good to hear, and like people like Abhay who are interested to have like awareness programs would be definitely, and this we should need to be looking this to a wider phase, that this webinar is also a kind of webinar which will create some awareness either to 10 peoples or to like any quantity, that doesn't matter, the quality matters. So that I prefer to say. So thank you everyone. Anyone, if anyone want to like say anything, ma'am, sir, anything? I would like to thanks to Bhumika Trust and sorry, can I? Yes. Yeah. So I'm thankful to Bhumika Trust for giving me this opportunity, and special thanks to Deepa ma'am, because she's always dragging me and it's a good learning for me also. And thanks because we are always searching opportunity to spread awareness about leprosy. So thank you, Deepa ma'am, and also happy birthday to Namrata ma'am. Thank you for giving time on your birthday also. Because we know you are busy, you may busy with your friends and family. Sir, it is nothing much. But I'm glad this session it went well, and I hope this is going to, our discussion with Suresh ji is going to set a trend for the young team that's running Bhumika Trust, in the sense that this is the kind of people and kind of interactions that you're going to have in the future also, where it's always community based, where it's always about real problems that people affected are facing directly.
and it's going to be like a different non-metro, non-university, little bit away from what is generally being discussed at the university circle and metropolitan cities. So I hope this is going to set a new trend for you guys. So in the coming years, it's going to shape your direction ahead, because it's also you're a new organization. And I hope that we have, if at all anything created awareness or not, you at least contributed in shaping your direction ahead in the coming years, actually. Thank you. Thank you for this opportunity, Vivi. And Thanks. all the best and best wishes to the team. Thanks, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Thank you. everyone. Thank you. So we can shut down now, I think. Yes, Thank you. everyone can. Thank you. Suresh, thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Bye.